On behalf of CBIP, we extend hearty welcome to all of you to this day two of this training program on mastering the financial modeling of solar power plants, organized by CBIP jointly with Aero. So yesterday we had a keynote presentation by Shri Abhishek Ranjan ji, who is a senior vice president strategy from Renew Power Limited, and a presentation by Shri JP Singh ji, who is a solar consultant and trainer. So today's session will be for 1.5 hours, including question and answer session at the end. So without any further delay, I would like to invite JP Singh ji to continue his presentation. So I request you, sir, to kindly start with your presentation now. Over to you, please. Sir, kindly unmute yourself. Sir, your mic is on mute. Kindly unmute yourself. Sir, we are not able to hear you. Kindly unmute your mic. सर जहाँ शेयर बटन है उसके साथ में ही माइक माइक का है आइकन, तो उस पे आप एक बार क्लिक कीजिए प्लीज, कैमरे के साथ में। Now you can hear me, Shikha ji? Yes, sir. Okay, wonderful. There was some technical glitch. I was unmuting myself and again it was happening for the muting. So I tried it 2 or 3 times, then I thought better to log in again. So first of all, namaskar and very warm welcome to all the participants. Thanks for showing up for today again. It's wonderful to see that so far we have got 27 attendees and 5 from the CBIP side. So wonderful. I guess we have got the almost 80 to 90% of the strength, Shikadi. Am I right? Yes, sir. 90%. 90%. So we can start our session without wasting any time because there could be 1 or 2 or 3 people. They can join whenever they get some time. Okay, fine. So let's start for the day. So first of all, I believe that it is very important to revise the concepts, and because by doing the revision, we strengthen our learning. So I would be taking 5 to 10 minutes for the revision so that we strengthen our basics and then we move forward. First of all, apology from my side. I couldn't send you the practice sheet yesterday. I got up, I thought I will prepare it in the morning and will send it to you, but somehow I got a bit late in sending it to you. So I am just sending the link of the practice sheet in the chat box. I request all the participants to kindly open this link and there you will find the questions and then you can do this question your own self. आप इस questions को खुद करेंगे, you will gain a lot of confidence. And also I'm going to share the sheet with you, जो Excel sheet होगा. But एक दो questions I request, अगर आप ये practice sheet को अपने हाथ से करते हैं, तो then you would always be able to remember the basics. कभी वो भूलेंगे नहीं. So
इसी शीट के ऊपर अप्रोक्सीमेटली आई गेस 10 के आसपास क्वेश्चंस होंगे। जैसे क्वेश्चंस हमने कल देखे थे उसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, एंड दैट विल स्ट्रेंथनिंग योर लर्निंग। सो क्विकली वी हैव गॉट लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स नाउ। So 31, wonderful. So 3 more participants have joined. So now I think that we can go full-fledged. So revision करते हैं शुरू, and revision में let us check some of the basics, and उन्हीं basics को workout करके today we have lot of things. We will talk about solar, we will talk about some financial modeling aspects, and also we will jump into the real aspects of financial modeling for the solar power plants. So now we are going to do the revision, and revision के लिए there would be some questions. The first question is, and I request all the participants कि आपका जो enthusiasm level है बहुत अच्छा होना चाहिए, and whenever we are talking about the financials, I believe all our ears, all our eyes should be opened widely so that we don't miss anything. So the first thing is that if my NPV is negative, if my NPV, let us say I am investing 1000 rupees and my NPV is 30 rupees, should I invest or not? Should I invest or not? If you feel that I should invest, then please type yes. If you feel that I should not invest, then please type no. So my NPV is 30. It is negative. So wonderful, wonderful to see that all the participants have mentioned that since it is negative, so I should not invest. Now let us take one more example. I am going to invest 10 lakh rupees and my NPV is 50,000 rupees. Should I invest or not? Should I invest or not? So yes, thank you Varun ji, Mohammad Nazir ji, Sanjay ji, Ram Babu Singh ji, Varun ji, Keshwam ji. Yes, absolutely. If I am investing 10 lakh rupees and I am getting, yes, Chopra ji, it is thumbs up. I should invest because my NPV is positive. Now let us take one more example. I am investing 1 lakh, 10 lakh rupees and my NPV is 50,000 rupees. The same question. And I have TCF, my discount rate is 10%. My discount rate is 10%. तो मेरा जो IRR होगा वो 10% से ज़्यादा होगा या कम होगा? If I am investing 10 lakh rupees and I am getting an NPV of 50,000 rupees and I am discounting at 10% rate, what is my IRR? Is it higher than 10% or lower than 10%? आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी बेसिक थिंग्स। बेसिक के ऊपर कमांड होगा आपका तो यू वुड बी ऑलवेज राइजिंग इन योर करियर। बेसिक्स मेक्स द फाउंडेशन, एंड फाउंडेशंस जहां पे कैसल्स बिल्ड किए जाते हैं। एंड प्लीज गेट इन्वॉल्व इफ यू वांट टू गेट इन्वॉल्व होंगे तो इवॉल्व होंगे। एंड प्लीज शो सम मोर एंथुसियाज्म। माय क्वेश्चन इज, आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट 10 lakh rupees फॉर एन इन्वेस्टमेंट। माय एनपीवी इज 50%। आई हैव टेकन अ डिस्काउंट रेट ऑफ 10%। मेरा IRR 10% से ज्यादा होगा या कम होगा? So wonderful to see that all the participants, none of the participants have said, all are absolutely correct. Now the next question is, I am going to invest 50 lakh rupees and my NPV and my discount rate is 15%. मेरा 15% का डिस्काउंट रेट है, मैंने 15 लाख रुपए लगाया है और मेरा NPV जीरो आ रहा है। मेरा NPV जीरो आ रहा है तो मेरा IRR रेट क्या होगा? कमोन थोड़ा और पार्टिसिपेशन कीजिए। लेट अदर जो रिस्पांस नहीं कर रहे हैं उनको भी आपका आंसर जाने के बाद क्लियर होना चाहिए कि दैट व्हाट इट इज। सो बिल्कुल ठीक मेंशन किया है श्रवण कुमार जी ने, इक्वल टू डिस्काउंट रेट। इट मींस कि जब एनपीवी जीरो हो जाता है तो आपका आईआरआर बिल्कुल डिस्काउंट रेट के बराबर हो जाता है। वंडरफुल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माई इन्वेस्टमेंट इज 10,000 rupees and my NPV is minus 100. My investment is 10,000 rupees and my NPV is minus 100 and my discount rate is 8%. My discount rate is 8%. तो मेरा IRR 8% से कम होगा या ज्यादा होगा?
Very good, Abhijit ji, Keshwam ji, Anil ji, Shravan ji, Jitendra ji. Wonderful to see that you all have got very good understanding of NPV. Shahnawaz ji, yes, you are absolutely right. Wonderful understanding of NPV, IRR. NPV का decision criteria, if my NPV is positive, I will invest. If my NPV is negative, I will not invest. Because if my NPV is positive, then it will add to my wealth. If my NPV is negative, it will decrease my wealth. And what is IRR? When my NPV is zero, that's the rate what I am going to get as a return. So यहाँ पे एक और चेक करते हैं. कल अभिषेक रंजन जी ने जब सुबह कंटेक्स्ट सेटअप किया था अर्ली इन द सेशन, ही मेंशन्ड दैट सोलर प्रोजेक्ट्स में IRR कितना देखा जाता है? What is the expected rate of IRR in the solar power plants? Yes, Keshwam ji, it is 16 to 25, 16 to 20%, absolutely right. So wonderful to see here. Now let us broaden our understanding. थोड़ा एक दो एग्जांपल और लेते हैं. Let us say आपने एक बैंक से लोन लिया है 10% के ऊपर, तो आपको जो IRR चाहिए होगा वो 10% से ज्यादा चाहिए होगा या कम चाहिए होगा? You have borrowed the capital from a bank at the rate of 10%. What should be your IRR? It should be higher than 10 or lower than 10? Uh, Shikha ji, is my voice coming? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So my question is that you have borrowed some capital from the bank at the rate of 10%. What should be your IRR? It should be greater than 10 or lower than 10? Are there any responses in the chat box? I'm not able to see it. Okay, I'm sorry. There are responses. I thought that there were no responses. Yes, wonderful to see that it is higher than 10%. Now, one more question which I wish to ask you. You are given two alternatives of investment. आपके पास दो alternative हैं investment के. एक के अंदर बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनिएगा, बड़े ध्यान से. अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ए है, इन्वेस्टमेंट बी है. इन्वेस्टमेंट ए में आप 10 लाख रुपए लगाते हैं और इन्वेस्टमेंट बी के अंदर आप 5 लाख रुपए लगाते हैं. इन्वेस्टमेंट ए जो है आपको 10,000 रुपीज़ का एनपीवी देती है. इन्वेस्टमेंट ए आपको 10,000 रुपीज़ का एनपीवी देती है. इन्वेस्टमेंट बी जो है आपको 4,000 रुपीज़ का एनपीवी देती है. विच इन्वेस्टमेंट इज बेटर फॉर यू? कैन यू डिसाइड? नाउ आई एम ग्रेजुअली बिल्डिंग इट अप. धीरे धीरे मैं अब इसको आगे लेके जा रहा हूं. सो वरुण भटनागर जी सेइंग इन्वेस्टमेंट ए इज बेटर. Investment A is better. Why investment A is better? केशवम जी, कैन यू एक्सप्लेन? 10 लाख रुपए आपने लगाया इन्वेस्टमेंट ए में और आपको 10,000 रुपए का एनपीवी मिल रहा है. उसमें आपने 5 लाख रुपीज लगाया है और आपको 4,000 रुपीज का एनपीवी मिल रहा है. सो आपका एक बेसिस है रिटर्न इज मोर ऑन पर रुपी इन्वेस्टमेंट. ये बेसिस आपका बिल्कुल ठीक है वरुण जी, इसको आप रेफर कर सकते हैं. बट जब इक्वेशंस के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एक्सपेंसेस के तौर पे, डेप्रिसिएशन के तौर पे, काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस के तौर पे, तब हमें एनपीवी इज ए गुड मेजर, अ गुड इंडिकेटर टू फाइंड इट आउट वेदर दिस इज ए वेल्थी प्रोपोजिशन और नॉट. व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स कि मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो हमें एनपीवी से पता लग जाता है. बट IRR gives us the absolute comparative basis. Let us say if I give you an alternative कि इन्वेस्टमेंट A में आपको 15% का IRR मिल रहा है और इन्वेस्टमेंट B में आपको 14% का IRR मिल रहा है. Now you are absolute clear which is more beneficial. Obviously A is more beneficial. So what I mean to tell you here that NPV is a basis to find it out whether it is a good or not, and IRR is the basis to figure it out on the absolute basis. Does it make sense to all of you? Okay, now let's move forward. We did
एक थंब रूल भी हमने कल शेयर किया था, उसको भी चेक कर लेते हैं फटाफट से. इफ आई गिव यू 1 लाख रुपीज and I tell you that bank is offering you 18% interest, in how many years it will be doubled? Yes, संजय जी, भदौलिया जी, रावत जी, भटनागर जी, तुलसीदास जी, तुलसीधर जी, absolutely right. So wonderful to see that you are able to remember your basics. Now let's move forward. We have covered the basics of the financial model. आज मैं थोड़ा सा पहले सोलर से शुरुआत करूंगा. सोलर से शुरुआत करने के बाद we will go back to the financial modeling side. What do you want? थोड़ा सा हमारा सिंपल कंसेप्ट है फाइनेंशियल मॉडल के. इट विल टेक 15 मिनट्स. Should we do first that or should we go to the solar? As you say, I will do that. There is a small portion of the financial side is left. Which one would you like to do first, solar or the financial? Okay, so majority are saying about the financial. So solar we will cover, Tulsidhar ji. Solar we will cover. So majority we are saying in the financial. So let's begin with the financial. See, I have tried to keep all the things in this presentation. My intent is कि कोई भी कैलकुलेशन हो आपके लिए वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आपका बिल्कुल लॉजिक वहाँ पे क्लियर होना चाहिए. तो जो इंडस्ट्री में प्रिवेलेंट टर्म्स भी हैं, वो प्रिवेलेंट टर्म्स को भी क्लियर करना है. और वो प्रिवेलेंट टर्म्स क्या क्या है, कैसे कैसे होती हैं, उसके ऊपर इट विल टेक 10 मिनट्स. उसको भी थोड़ा सा हम लोग पॉलिश कर लेते हैं. तो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन. Yeah, so I am going to share my screen here. Mm, yeah. So are you able to see my screen, Shikha ji? Are you able to see my screen, Varun ji? Yes, sir, visible. Sir. Okay, wonderful. So इसके साथ साथ what we are trying to tell कि इंडस्ट्री में आपने पे बैक पीरियड का एक बहुत मतलब you would have always come across this term पे बैक पीरियड. So क्विकली से इसको भी पॉलिश कर लेते हैं. पे बैक पीरियड में क्या होता है? पे बैक पीरियड में बड़ी सिंपल कैलकुलेशंस होती हैं. लेट अस से यू आर इन्वेस्टिंग 5 lakh rupees in a solar power plant, and solar power plant is giving you 1 lakh rupees of energy every year. So what is the payback period? The payback period is 5 years. So that is the simple calculation for the payback period. And also in the case of the payback period, the main emphasis is ki how much time your money will get back to you. In how much time your money will get back to you. That is the only criterion in the payback period. There is no concept of discount rate, there is no concept of discounted cash flow, there is no concept of NPV. The only concept is I am putting up 100 rupees in the investment and I am getting 25 rupees every year, and I will get back my money in a 4 years period. So that's the only simple concept. So you can see here the investment is $1,20,000 and every year he is getting a return of $30,000. So payback period is 4 years. Payback period doesn't talk about discount rate or NPV. So यहाँ पे let us say there are two investment, project X and project Y. Project X is giving you both the projects having the initial investment of $1 lakh. The project 1 is giving you cash inflow of $70,000, $30,000 and $0 in the next year. And the project Y is giving you 50,000, 45,000 and 20,000. Now from the payback period perspective, you can say that project X will give you quick payback. Project X will give you quick payback, but project Y is offering you more returns. Now you can also see the difference here. Project X is giving you payback in quickly. It is giving you payback in 2 years. But Project Y is giving you more returns because it is offering you some return in the third year also.
So what my point here is, to sharpen our financial knowledge, financial skills, we should see पेबैक पीरियड को अगर हमें कहीं पे यूज करना पड़ता है, इफ वी हैव टू चूज पेबैक पीरियड, देन वी नीड टू सी कि एक तो उसका पेबैक पीरियड कितना है और पेबैक पीरियड के बाद भी वो कितनी रिटर्न देता है. वी शुड नॉट मेक कि किसका पेबैक पीरियड जल्दी है उसी को सिलेक्ट कर लें. दैट शुड नॉट बी द क्राइटेरिया. द क्राइटेरिया शुड बी कि पेबैक पीरियड के बाद, चलो पेबैक पीरियड तो एक प्रोजेक्ट पॉइंट है, बट हु इज ऑफरिंग द मोर रिटर्न इन द लॉन्गर टर्म. लॉन्गर टर्म में तो अगर आप देखेंगे तो प्रोजेक्ट वाई आपको ज्यादा रिटर्न दे रहा है ना, बिकॉज इट इज ऑफरिंग यू $1,15,000, जबकि प्रोजेक्ट एक्स आपको $1,00,000 ही रिटर्न कर रहा है. So the point which I'm trying to clear here is, if you are doing some financial analysis, you should not take a call on the payback period basis. Your call should always be on the basis how much extra I am getting on my investment. Is this point clear to everyone? Is this point clear to everyone? Please type yes in the chat box if it is clear to everyone, because this is very important point, because in my career what I have seen that people often talk about we should go with this, iska payback period low hai. It could be that the payback period is low, but it could be that the other investment which is giving you high payback period, जो 4 साल की जगह 5 साल का payback period दे रहा है, but वो आपको कुछ और साल ज़्यादा चल जाए, और ये मशीन आपका 4 साल की ही चले और वो मशीन आपका 7 to 8 years चल जाए. So you should never make any decision on the payback period. Your decision should always be focused on the basis of what is the क्यूमुलेटिव रिटर्न आई एम गोइंग टू गेट. मेरे को पूरा लाइफ टाइम में कितना पैसा मिलने वाला है. दैट शुड बी योर बेसिस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस. नेवर स्टिक योरसेल्फ टू द पेबैक पीरियड. इफ समवन कम्स टू यू, we should go with the alternative A because it has low payback period. Then ask how much return I am going to get from A in the lifetime, how much return I am going to get from alternative B in the lifetime. If you are going to get high return from alternative B in the lifetime, you should go with the alternative B. And for that, अगर आपका payback period एक साल late भी होता है, doesn't matter at all. So my point here is, let us broaden our financial understanding so that we take the wise decision from the financial perspective whenever any project comes to us. So here is some question from Tulsi Darji. You mean that NPV is more important than payback period? Yes, absolutely, Tulsi Darji, because if it could be possible, now you can see I have taken an example just to clarify all the things. यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस एग्जाम्पल में आपकी एनपीवी तो कुछ बड़ी ही नहीं प्रोजेक्ट एक्स के अंदर. 1 लाख आपने लगाया और आपके पास 1 लाख ही वापस आया. फर्स्ट ईयर में 70,000 आया, सेकेंड ईयर में 30,000 आया. आपकी एनपीवी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, हालांकि आपकी एनपीवी कम ही हुई होगी अगर आप इसमें डिस्काउंटेड कैश फ्लो लगाएंगे तो. बट लेट अस से वो भी नहीं लगाते हैं आप, तो आपकी एनपीवी तो कुछ भी नहीं बढ़ी, और प्रोजेक्ट वाई के अंदर आपकी एनपीवी $15,000 बढ़ रही है. बट माय पॉइंट हियर इज कि अगर आपने डिसीजन, क्राइटेरिया ऑफ डिसीजन, इट इज कॉल्ड क्राइटेरिया ऑफ डिसीजन, अगर आपका क्राइटेरिया ये है कि किसका पेबैक पीरियड कम है उसी को ले लो, देन यू विल चूज प्रोजेक्ट एक्स. एंड अगर आपका क्राइटेरिया ये है कि किसकी वैल्यू ज्यादा निकल के आ रही है उसको ले लो, देन यू विल चूज प्रोजेक्ट वाई. व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस, बिकॉज आई विश टू क्लैरिफाई you can make a decision on the payback period, but always consider who is offering you more returns in the life cycle. So here project Y, because इस project की life cycle 3 साल थी, so here Y is offering you more returns. So that's the point actually. So coming back to the questions. So Tulsidhar ji, that is the answer to your question. So is lesser payback period is equal to higher IRR always? The answer is yes. The lesser payback period is higher IRR, no doubt about it. But point here is, let us say you are selecting a machine A, and then you have a machine B.
it could be possible that machine A is giving you very good returns in the initial years, but it has a life cycle of only 5 years. It has a life cycle of only 5 years. But there is a machine B, and machine B is giving you a life cycle of 10 years. So it means that you can use that machine for the another 5 years. So now if you have to choose between both of them, you would have to see कि दोनों की लाइफ साइकिल अर्निंग कितनी है, और दोनों की लाइफ साइकिल अर्निंग देखने के बाद ही you would be able to decide it. So that is the answer to your question, Biju Krishnan ji. Amit Chopra ji saying, so if payback period is good between NPV and IRR, we should use IRR to make final decision. Yes, absolutely right, Chopra ji, because on the IRR basis you can find it out on the decimal basis. एक का केस अगर 15 है और एक का 15.5 है, तो you definitely would like to go with 15.5%. NPV to be more than 0. NPV should always be more than 0 to accept any project. That is, Najir ji, from this perspective, अगर आपका NPV, if it is not more than 0, then you are making a loss project. If NPV is more than 0, then you are making a profit project. So I hope this point is very well understood by all the participants. The intent is that कि payback period को कभी भी अपना criteria मत बनाइए. Always ask कि दोनों alternatives को सामने रखो और दोनों alternatives में बताओ कि दोनों alternatives में लाइफ साइकिल अर्निंग कितनी होने वाली है, तो उसी के बेसिस पे आपका डिसीजन आना चाहिए. नेवर मेक योर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ कि इसका पेबैक पीरियड जल्दी आ जाएगा, इसको ले लेते हैं. दैट शुड नेवर बी योर क्राइटेरिया. योर क्राइटेरिया शुड बी on the basis of life cycle perspective. So I hope this point is clear. Now take one more example. Now, so the project X has a payback period of 2 years, project Y has a payback period of slightly more than 2 years. Which project do you think is better? Definitely the project Y is better. Now shortcomings of the payback period, जो shortcomings of the payback period है, उसमें हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ द मनी नहीं लेते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो नहीं लेते हैं. दैट इज द शॉर्टकमिंग ऑफ द पेबैक पीरियड. नाउ ऑल्सो इट इज वेरी, whereas the payback period has some shortfalls, but there are some strengths also because it serves as screening tool. छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए पेबैक पीरियड को यूज किया जा सकता है, छोटे पीरियड्स के प्रोजेक्ट्स के लिए. बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इसमें बहुत सारा like you know, if you have to buy let us say if you have to buy a printer in the office, then you can compare between the two on the simple basis. But if you are going to do a solar power project जिसमें O&M involved है, जिसमें insurance involved है, जिसमें you know damage control everything is involved, maintenance is involved, तो वहाँ पे expenses भी हैं, वहाँ पे depreciation का calculation भी है, all those things are there. So there this payback period will never serve you. Identifies investment that recoup cash investment quickly. एंड छोटा छोटा सा जो आपका कई कैलकुलेशंस होगा उसमें पेबैक पीरियड बहुत एप्लीकेबल हो जाता है, वहां पे हमें IRR या NPV का नीड नहीं होता है. नाउ पेबैक कई बार अनइवन कैश फ्लो भी होता है. सो लेट अस से देयर इज अ प्रोजेक्ट इन विच द कैश फ्लो इज हैपनिंग. फर्स्ट ईयर में $1000 है, सेकेंड ईयर में कुछ नहीं आया है, थर्ड ईयर में $2000 है, फोर्थ ईयर में $1000 है, फिफ्थ ईयर में $500 है. सो इस प्रकार से भी आपको यू माइट कम अक्रॉस अनइवन कैश फ्लोज, और उसमें आपको टोटल करके देखना होता है कि कितना कैश फ्लो आ रहा है. Along with this, there is one more method which is called simple rate of return method. What is simple rate of return method? Now let us say that management of a plant wants to install a machine जिसका cost कितना है $1,20,000 and has a 8-year life, और उसका जो रिवेन्यू है इस फर्स्ट ईयर में $70,000 है एंड जो उसके एक्सपेंसेस हैं $40,000 हैं, राइट. तो व्हाट डज इट मीन्स कि मशीन का जो कॉस्ट है वो $1,20,000 है एंड आपका जो पर ईयर का इनकम है वो $70,000 है और जो एक्सपेंसेस होता है उस मशीन को चलाने में दैट इज $40,000. सो व्हाट डज इट मीन्स कि आपकी जो इनकम है वो $30,000 है पर ईयर, $30,000 है, और आपने पैसा कितना लगाया है $1,20,000. तो इट मीन्स आपकी सिंपल रेट ऑफ रिटर्न कितनी हो गई 25%. सो अगर आपको किसी प्रोजेक्ट के अंदर सिंपल रेट ऑफ रिटर्न निकालना हो तो
तो यू कैन डू इट इन दिस वे। आप उसका जो इनकम माइनस एक्सपेंसेस हैं उसको कीजिए, यू विल बी गेटिंग योर प्रॉफिट, एंड उस प्रॉफिट को आप कैपिटल से डिवाइड कर दीजिए, यू विल बी गेटिंग द रिटर्न। दिस इज अ सिंपल रेट ऑफ रिटर्न अगर आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए निकालना हो तो। सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज एनपीवी, व्हाट इज आईआरआर, हाउ एनपीवी contributes to wealth or how NPV decrease the wealth, what is IRR, how IRR is achieved on the basis of making NPV equal to zero, and also we have understood that if I have to make a decision, then payback is not a criteria to make any decision. The criteria is on the basis of the life cycle earning. So अगेन सिंपल रेट ऑफ रिटर्न में जो आपका टाइम वैल्यू कंसिडर नहीं होता है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो कंसिडर नहीं होता है। सो दिस इज दी बेसिकली ऑल दी पैरामीटर्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जो इंडस्ट्री में टर्म्स चलती हैं, पे बैक पीरियड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, simple rate of return. The simple rate of return is also called return on investment, payback period. So I have tried to clear all those things with you, and I hope all these things are quite clear. If there is any doubt to any participants, please let me know, because after this we shall be going forward for the solar terms, which are very important to understand. Because agar what my intention is, if you are going to be a financial modeler or financial analyst for a solar power plant, you can take the terms from the financial perspective, कितना capital है, क्या investment है, क्या purchase है, क्या but if you have a good understanding on the terms like performance ratio, CUF, specific yield, and also in understanding the generation, understanding how CUF is getting affected, how irradiance plays a role in the generation, then you would be able to ask the right question to your team whether they have assessed the information absolutely correct or not. Because what happens in our systems, whenever we have to start a project, we firstly copy it from some previous project, and when we copy it from some previous project, I am pointing out the real problems in the industry जो मेरे साथ भी होती है, I am also part of it. हम लोग जब उसको कॉपी करते हैं, उसको कॉपी करने के बाद उस प्रोजेक्ट को बिल्डअप करते हैं, उस प्रोजेक्ट को बिल्डअप करने के बाद व्हाट हैपन्स, वी समटाइम्स फॉरगेट टू मेक चेंजेस, और गलती हो जाता है कई बारी। सो इफ आई हैव द नॉलेज टू फाइंड इट आउट कि ये गलती है यहाँ पे, यहाँ ये कॉपी का एरर हो गया है, आई कैन पॉइंट इट आउट। बट इफ आई हैव नो इंफॉर्मेशन और नो नॉलेज ऑन दैट फ्रंट, then what it will happen, then the project will go with the wrong analysis. Let us give you an example. The irradiance is quite high in Rajasthan, okay, but irradiance is not good in Haryana. So if you take the value of irradiance from Rajasthan to Haryana, there is a difference. Now let us say you have made a project for Rajasthan in the beginning, and now you are copying it for Haryana, and you have forgotten to change the irradiance values. What it will happen? You will be giving a very high generation for this project, and ultimately there would be wrong analysis. So what my point is that we should be clear about all those things, and whenever you are doing the financial modeling, you would have to build up the technical part of the knowledge on your own side, on your own basis, so that whenever you are dealing with the financial modeling, जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबके साथ बातचीत के दौरान you can talk on the technical basis, you can talk on the realistic basis. So that's the basis. There is one question from Shravan Kumarji. It is asking, sir, can you explain the answer in your earlier example, 10 lakh with 10,000 return and 5 lakh with 4,000 return? Which option is better? Shravan ji, this question was just to ignite your mind कि कैसे आप हमारा माइंड सोचता है। अगर मुझे 10 लाख रुपए के ऊपर 10,000 का रिटर्न आ रहा है, तो व्हाट आई एम सेइंग, 10,000 एनपीवी बढ़ रहा है, तो एक एनालिसिस मेरा ये निकल के आ रहा है कि मेरा एनपीवी 1% बढ़ गया, एक तरह से मेरा एनपीवी 1% बढ़ गया। और दूसरी तरफ मेरा 5 लाख के ऊपर 4% रिटर्न आ रहा है, तो मेरा एनपीवी जो है 0.8% बढ़ा, 0.8। सो ये एक बेसिस था कंपैरिजन करने के लिए। बट दूसरी तरफ से अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ इक्वेशंस ऐसी हो सकती हैं डेप्रिसिएशन के तौर पे, एक्सपेंसेस के तौर पे,
उसको सही मायने में रियलिस्टिक तौर पे डील करने के लिए आपको IRR कैलकुलेशन ही करना होगा. And Biju Krishnan ji is asking, is IRR calculation possible? Simple rate of return. Sorry, simple rate of return calculation possible for uneven yearly cash flows. Simple rate of return calculation is not possible for uneven yearly cash flows, because let us say in the first year, if I take that example, 70,000 was income, 30,000, 40,000 was expenses. So 30,000 was the profit. Let us say in the next year the income goes to 80,000 and the expenses remain 40,000. So in that particular case, the income would be the profit would be more, and accordingly, if the profit is more, then what will happen? Then the simple rate of return will go high. Now let us take an example. There is a printing machine, and let us say the cost of printing of one paper is 1 rupee. Now let us say in the first month he has printed 70,000 paper. So what is his income is 70,000 rupees. Now let us say for doing 70,000 papers, his cost is 30,000 rupees, which includes the raw material. Let us say the cost of the raw material is 20%. So the cost of the raw material is 14,000. 70,000 ka 20%, 40,000, 14,000. And now let us say the other cost is fixed, like the electricity, the cost of the manpower who is running the machine. वो सब मिला करके 26,000 का कॉस्ट उसका फिक्स आ जाता है. नाउ इन द नेक्स्ट मंथ उसको 80,000 प्रिंट्स का ऑर्डर मिल गया. सो 80,000 प्रिंट्स के लिए उसके पास 80,000 रुपीज आ गया, एंड उसका उसका कॉस्ट क्या होगा? 80,000 का 20% रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है दैट इज 16,000, और 16,000 के ऊपर 26,000 का उसका फिक्स कॉस्ट है, जो कि मैन पावर का कॉस्ट है और इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है. थोड़ा सा वेरिएशन उसमें होगा, बट लेट अस से बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है. तो उसका कॉस्ट कितना आ गया? 45,000 रुपीज़ लेट अस से. तो अब उसका इनकम कितना हो गया? प्रॉफिट हो गया 35,000 रुपीज़. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सिंपल रेट ऑफ रिटर्न इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर हैविंग काइंड ऑफ इवन कैश फ्लो. फॉर एग्जांपल आपने एक बिल्डिंग रेंट पे दी है, तो वहाँ से आपको बिल्डिंग की इन्वेस्टमेंट आपकी 1 करोड़ की थी और आपको पर मंथ 1 लाख का रेंट आ रहा है. तो यू कैन से दैट पर मंथ आई एम गेटिंग 1%. या और कोई ऑप्शन आपने गाड़ी रेंट पे दिया है, पर मंथ यू आर गेटिंग 20,000 रुपीज़ एज ए रेंट and your cost of vehicle is 10 lakh. You can say that I am getting 2% return per month. So these are the basis of simple rate of return. I hope it is clear now, Biju Krishnan ji. Okay, great. So now it's time to move forward to the solar part. If there is still any question left, you can ask, or else we will move forward to the solar part. So when I am doing this project, so it seems that now we have a green signal for the solar side. So I will take the solar PPT. So whenever we are doing a solar power project, what I am trying to share here, Shikha ji, can you see my screen? Varun ji, I have changed the PPT. Varun ji, can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. It's visible, sir. Yeah. Okay, great. So now we are talking about some of the critical aspects जो कि बहुत important होते हैं किसी भी solar power plant के अंदर. जब भी आप कुछ important terms बड़ी clear होनी चाहिए फाइनेंशियल मॉडलर को, चाहे वो टेक्निकल बैकग्राउंड से है या नहीं है. अगर वो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है तो भी उसका इन टर्म्स के ऊपर पूरा होल्ड होना चाहिए, उसको ये टर्म्स पूरी क्लियर होनी चाहिए. सो माय इंटेंट इज कि लेट अस understand these terms in a very clear manner, and I have tried to keep these terms बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, so that we can understand it and we can remember it for a long time. So let us begin with the CUF. जो रंजन जी कल CUF की बात कर रहे थे उसी से शुरुआत करते हैं. So what is the CUF? For determining the performance of a solar power plant, आपको CUF की कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. CUF की कैलकुलेशन ही ऐसी कैलकुलेशन होती है जो भी आपको कोई भी इन्वेस्टर है वो सबसे पहले यही पूछेगा कि आपके प्लांट का CUF क्या है. लेट अस से यू वांट टू बाय अ सोलर पावर प्लांट. आपके पास एक प्रपोजल आता है कि राजस्थान में एक सोलर पावर प्लांट है 10 मेगावाट का, लेट अस बाय दैट. नाउ यू वांट टू बाय दैट सोलर पावर प्लांट.
तो आपका जो इन्वेस्टर के तौर पे पहला क्वेश्चन यही होगा, अदर देन दिस कि कितने का है जी, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, उसके बाद पहला क्वेश्चन यही आएगा, व्हाट इज द CUF ऑफ द सोलर पावर प्लांट, बिकॉज CUF टेल्स यू कि प्लांट कितना आपको आउटपुट दे रहा है, प्लांट कितना आउटपुट आपके खाते में डाल रहा है. सो दैट इज वाई CUF इज ऑलवेज प्रेफर्ड by the investors. You remember Ranjan ji was also mentioning about it in yesterday. It is expressed in the percentage. Now, अगर आपको CUF कैलकुलेशन करना हो, आई डोंट विश टू गिव यू एनी फार्मूला, मैं आपको कोई फार्मूला नहीं देना चाहता हूँ. आई डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन दी फार्मूला. आई जस्ट वांट that everything should be on your mind, should be on your tips, because the things on the tips becomes the wisdom on the lips, and when the wisdom speaks, the decisions are taken. So if I ask you, I believe that most of you, Dushyant ji is requesting control. So right, I think that some button is wrongly pressed. Okay. So I don't wish to give you any sort of dependence on the formulas. I know that most of you are from the technical side and you will be able to do it. My first question to you is, if let us do some mathematics on our own. My first question to you is, if I give you 100 kilowatt of solar power plant, 100 kilowatt of solar, sorry, if I give you 100 kilowatt of DG set, 100 kilowatt of DG set, which is giving you 100 यूनिट पर आवर, आपको एक 100 किलोवाट का DG सेट दिया जा रहा है जो आपको 100 किलोवाट पावर एवरी आवर दे रहा है, तो एक साल में आपको उससे कितनी बिजली मिलेगी? 24 आवर्स आप उसको चलाएंगे, 365 डेज चलाएंगे, तो आपको कितनी बिजली उससे मिलेगी? प्लीज आंसर इन दी चैट बॉक्स. So Varun Bhatnagar ji has mentioned 24 into 365. Shikha ji, can you please check? Dushyant ji has mentioned that Tulsi Dhar ji is not able to join. Please allow. Anyone from CVIP side, if Shikha ji is not there, then please ensure that Tulsi Dhar ji join us, because we are discussing very important things. Amit Chopra ji, I'm on the chat box right now. I have switched to the chat box because now we are doing some practical numericals. Yeah. Nazir ji, PPT is on hold now because we are doing the calculations. Now, absolutely right. Those who have said, Varun Bhatnagar ji, Neerath, Shiva Kumar ji, I have stopped PPT right now. I am just focusing on the chat box so that we can calculate this on our own. हम लोग इसको calculate कर लें. PPT is there. Don't worry. I will share this PPT with you at the end of the session also. All this will be coming to you. Don't worry. Let us focus on calculating, because the things on the tips becomes the wisdom on the lips. Never dependent on any formula. किसी formula पे आप depend मत रहिए. Always try to find out the root cause of the formula, कि वो formula कहाँ से बना है, क्या basis है उस formula का, और उसी के basis पे उसको हमेशा कीजिए. So let us say आपका 100 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट था और 100 किलोवाट. Okay, Nadir ji, I'm sorry. I got your point. Thank you so much. I got your point. Thank you. So, point is 8,76,000 यूनिट्स आपको वो प्लांट देगा जब वो 100 किलोवाट का डीजी सेट आप 24 घंटे चलाएंगे एंड 365 डेज चलाएंगे. अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आप 1 किलोवाट का प्लांट चलाते हैं 24 घंटे डीजी सेट 365 दिन चलाते हैं, तो कितनी बिजली आपको देगा वो? यस जुनेद, एब्सोल्युटली राइट, इट इज 8760. वरुण जी एब्सोल्युटली राइट, 8760. 1 किलोवाट का प्लांट, 1 किलोवाट का डीजी सेट आप चलाते हैं तो आपको मिलेगी 8760. नाउ दिस इज द बेसिस ऑफ CUF. आपका CUF इसके बाद क्लियर हो गया. अगर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं
तो आप किसी भी प्लांट का CUF निकाल सकते हैं. नाउ आई विल शो यू हाउ. Some of the participants are still bit hesitant to respond, and let me tell you, I like wrong answers more than the right answers, because in the wrong answers I feel the sense of application, I feel the sense of participation, I feel the sense of applying ourselves, and that is the most important thing. Applying ourselves without worrying whether it is right or wrong is more important. So let us say, let us take one example, and then we will see how does it mean. So now take this example. I gave you a figure that a solar power plant is giving you 100 kilowatt of solar power plant is giving you 1,30,000 units in a year. How much is the CUF? सो अपर पार्ट में आपने क्या देखा कि आपने 1,30,000 जो आपको सोलर पावर प्लांट दे रहा है वो लिया है, और बॉटम प्लांट में आपने क्या रखा है जो आपने अभी पहले कैलकुलेट किया था. यानी कि अगर एक सोलर प्लांट या एक DG सेट 24 घंटे चलता है, फुल कैपेसिटी पे चलता है, 365 डे चलता है, यानी कि फुल कैपेसिटी पे फुल टाइम पे चलता है, वो आपको क्या दे सकता है? वो आपको दे सकता है 8,76,000. 8,76,000 दे सकता है आपको. इसको आप करते हैं तो वो आपको दे सकता है 8,76,000, और ये आपको मिल रहा है 1,30,000. तो इफ आई टेल यू दैट you are getting 1,30,000, whereas in ideal situation it should be 8,76,000. So then you get a figure of 14.8% as CUF. इसमें क्या किसी को कोई डाउट है? If anyone has a doubt, then please let me know. Anyone from CBIP side? Biju Krishnanji is mentioning that he is not able to unmute himself. So can you please check? Just give me a moment, sir. Just Yeah. Because it is very important that if participants have some question, they should be, yeah. So there is some problem on my side. The slides are stuck on the previous. Let me change to the, just one sec. Let me change it to the, now you are able to see CUF calculation? Yes, sir. Yeah. So this is the PPT which is for the CUF calculation. So you can see here 1,30,000 you are getting, whereas the potential is 8,76,000. So you are getting a CUF of 14.8%. Now take one more example for a period of 90 days. Let us say that you are asked to calculate for 90 days. The plant size is same 100 kilowatt, and you are asked to get it for 90 days. So what you are doing, in the denominator नीचे वाले हिस्से में 100 is here represents the plant size, 90 represents the number of days, 24 represents the number of hours in a day. So this gives you the total, and on top you put 30,000 as your output. 100 is for the percentage multiplier. What output you get? 13.8%. I hope this CUF is now on your tips. You will never forget it. Am I right? Those who believe that they would always remember CUF, please type yes in the chat box. Will you ever ask for the CUF formula, or will you say, yes, I will be able to calculate it. I don't need any formula. You simply have to run a DG set of 100% at 100% for the full duration of the period, and then just simply put the numerator as what you are getting from the solar and denominator as the output, and then you are going to get it CUF. You will never forget it. Now let us take some examples of the CUF. I am giving you a 100 kilowatt of plant which is giving you
1,50,000 units. I am putting up it in the chat box. 100 kilowatt of the plant, 1,50,000 units in a year. What is my CUF? So absolutely right, it is 17.12%. What you have to do, you have to simply divide 1,50,000 by 8,76,000 and you get your answer. Absolutely right. Those who are not responding, I request, because अगर आप एक बारी कर लेंगे उसको अपने हाथ से, then you would be able to remember it. अपने हाथ से करने से बहुत ज़्यादा चीज़ें याद हो जाती हैं. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि अपने हाथ से कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखिए and let other participants also know that you are participating, and let's make more conducive environment. The more vibration in the learning sphere results into more absorbing and more shocking of the concepts. So अगर आप environment में और respond करते हैं, communicate करते हैं, so it is going to build more energy into the environment. Now take one more example. आपके पास एक 1 megawatt का प्रोजेक्ट है, 1 megawatt का प्रोजेक्ट है and it is giving you 16 lakh units in a year. What is my CUF? 1 megawatt of project. 1 megawatt is 1 lakh, sorry, 1 megawatt is 1000 kilowatt peak. Wonderful, Tulsidhar ji, 18.2%. You are on a jet speed right now. Wonderful, Keshvam ji. Come on guys, more responses are very important. These are very important. CUF के बिना financial modeling की बात करना मुश्किल है. Now let us say someone comes to you and says that I am offering you CUF of 40%. You will simply reject the project क्योंकि CUF 40% का possible ही नहीं है. और if someone comes to you and tells you that I am offering you 10% CUF, you will simply discard it because you will tell that 10% CUF का कोई फायदा नहीं है. Or else you would try to find it out कि CUF कम क्यों है. So you need to have all these bases so that you understand. So wonderful. Let us take one more example of 2 megawatt of the plant which is offering you 30 lakh units. Now let us see what is my CUF. Yes, Keshwam ji, absolutely right. It is 17.12%. So, sorry. So now I hope CUF is clear to everyone. Do I need to give more example or should we move forward? I think that we can move forward. Yeah, we can move forward. Now let us take another parameter. So CUF is clear to you now. Now we are going to talk about the second thing, which is specific yield. And what is specific yield? Specific yield का मतलब सिंपल ये है कि आपको एक लेट अस से जो भी आपके प्लांट का साइज हो सकता है, इट कुड बी 50 किलोवाट, 100 किलोवाट, 500 किलोवाट, 1 मेगावाट, 5 मेगावाट, इट कुड बी एनीथिंग. बट स्पेसिफिक यील्ड टेल यू कि आपको पर किलोवाट बेसिस पे कितनी आउटपुट आ रही है, पर किलोवाट बेसिस पे. सो दैट इज द पर्पस ऑफ स्पेसिफिक यील्ड. और स्पेसिफिक यील्ड को कैलकुलेट करना इज ओनली मैथमेटिकल एंड कॉमन सेंस थिंग. नथिंग इज इन्वॉल्व फ्रॉम द टेक्निकल साइड, nothing is involved from the any kind of alpha beta gamma calculation, only pure mathematical. So let us say you are getting 100 kilowatt in a day, 100 kilowatt in a day, and capacity of your plant is 25 kilowatt. What would be your specific generation for a day? Now if you are getting 100 kilowatt, 100 kWh or 100 units, it means you are getting 100 by 25, 4 unit per kilowatt peak. Now this gives you a fair idea कि plant आपको per day basis पे कितनी units दे रहा है. Now let us take one more example for specific yield. The month's generation is 3000 kWh and capacity of the plant is again 25 kilowatt.
So what does it means? It is giving you 120 units per day or 120 kWh per kilowatt peak. So specific yield purpose is if someone is talking to you on the basis of specific yield, you should know how to calculate it and what are the average values for it. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, I have kept it for all the cases, yearly basis and monthly basis and daily basis. Now the yearly case is the generation is 30,000 kilowatt hour. Capacity of the plant is 25 kilowatt peak. What would be the specific generation for a year is 1200 units per year per kilowatt peak. Now this is the purpose of specific generation, specific yield, so that you can calculate on your basis, and if any data is coming in front of you, so you can work it out. Now I will take one more example for this. If I talk about 1 kilowatt of solar power plant, 1 kilowatt of solar power plant, if I tell you it is giving you 1300 units in a year, if I tell you it is giving you 1300 units in a year, what is its specific yield per day? 1300 units in a year, what is its specific yield per day? Per day, Keshwam ji, per day. Yes. So 1300 यूनिट मेरे को एक साल में मिल रहा है और मुझे अगर पर डे निकालना है तो मुझे क्या करना होगा? 1300 को 365 से डिवाइड करना होगा. Got it? Then it will give me 3.56. Now if I tell you 1300, मुझे स्पेसिफिक यील्ड पर मंथ बता दीजिए कितना है. स्पेसिफिक यील्ड पर मंथ. So for specific yield per month, what you would have to do, you would have to divide 1300 by 12. It will give you specific yield per month. Now, when we are talking about specific yield, I am going to share 3 thumb rules with you. Kindly make a note and make sure that you always remember these values. The first thing is, if I say my 1 megawatt plant is giving me 15 lakh units in a year, 1 megawatt plant, 15 lakh units in a year. So what does it mean? 15 lakh units in a year, 1000 kilowatt peak plant. तो मेरा जो स्पेसिफिक यील्ड पर ईयर होगा वो कितना होगा? दैट वुड बी 15 lakh divided by 1000, which is 1500 kilowatt, 1500 units per kilowatt, and specific yield per month कितना होगा? Which will be 15 lakh divided by 1000, एंड और आप इसको ईयरली से भी निकाल सकते हो. तो ईयरली आपका 1500 आया था, उसी को 12 से आप डिवाइड कर देंगे तो जो भी आएगा वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी. एंड स्पेसिफिक यील्ड पर डे वो कितना हो जाएगा आपका? 1500 डिवाइडेड बाय 12, जो भी आएगा उसको आप 30 से डिवाइड कर लेंगे. सो आई रिक्वेस्ट वन पार्टिसिपेंट टू kindly calculate all these things and put it here in the chat box. Put it here in the chat box. So for the specific yield per year is 1500 kWh per kilowatt peak, and specific yield per month is what we get when we divide 1500 by 12. When we divide
1500 by 12, what we get? 125. Okay. kWh per kWp. Now take one more example here. Specific yield per day. And when we divide 125 with 30, how much we get? 4.19. Now, these are your three answers. You need to remember these three. You would always find कि जो सोलर की जनरेशन होगी इससे 10 से 15% कम की ब्रैकेट में होगी. लेट अस से 1500 की बात कर रहे हैं तो 1500 का 10% कितना होता है? 1350, 1350. तो सोलर की जो पर ईयर की जनरेशन होगी वो 1350 से 1500 की ब्रैकेट होगी. ओके, सो इसी को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं. मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं ताकि आपको बड़ा क्लियर हो सके. स्टेप बाय स्टेप में जब हम लोग इसको मॉडिफाई करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं इट्स नॉट कॉपिंग हियर और हाँ, तो 1500 की जगह कितना हो जाएगा? 1350 से 1500 का ब्रैकेट बन गया. 125 का अगर आप 10% कम करते हैं तो आपका ब्रैकेट हो गया 110 से 125. 4.19 का आप कम करते हैं 10% तो कितना होता है? लेट अस से इट इज 4.2. 4.2 का 10% कम करते हैं तो 3.75 से 4.19. यहाँ आप इसको 15% भी कम कर सकते हैं. तो ये आपकी वैल्यूज होती हैं जनरली. जो लास्ट मैसेज मैंने अभी किया है, वी आर इन द चैट बॉक्स सर, चैट बॉक्स में ही कर रहे हैं केशव जी. जो हमने किया है specific yield per year, if someone asks you तो you can tell it that it could be 1350 से 1500 किलोवाट आवर पर किलोवाट पीक. specific yield per month is 110 से 125 यूनिट पर किलोवाट पीक. specific yield per day is 3.75 to 4.19. Is there any doubt in anyone's mind? Because ये जो तीन चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं ये आपके टिप्स पे हमेशा रहनी चाहिए. इफ समवन इज टॉकिंग टू यू अबाउट, लेट अस से यू वेंट टू ए साइट एंड वहां पे आपको पता लगता है कि पिछले महीने की जनरेशन इतनी थी, तो देन यू कैन रेफर टू योर स्पेसिफिक यील्ड एंड यू कैन फिगर इट आउट वेदर इट इज गुड और नॉट. और यू कम अक्रॉस एनी प्लांट विच इज ऑफरिंग यू स्पेसिफिक यील्ड ऑफ 1100 यूनिट्स पर ईयर, तो देन इट मीन्स दैट प्लांट इज आइदर रिक्वायरिंग सम मेंटेनेंस, कुछ खराबी है, और इट इज नॉट गेटिंग क्लीन्ड, और यहाँ पे कोई और प्रॉब्लम है. तो दीज आर योर बेसिस टू मास्टर द बेसिक्स ऑफ द टेक्निकल साइड so that you remain very firm and very clear कि प्लांट ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है. Because if you are offered something and you find it out the specific yield of that particular plant, तो आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. And these all things are related to risk assessment also. Risk assessment में आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. So Mohammad Nazir ji has mentioned that why we consider 10%. 10% का मतलब ये है कि एक्चुअली में क्या होता है कि आपका कोई प्लांट, लेट अस टॉक अबाउट द जोग्राफी ऑफ इंडिया. इंडिया की जोग्राफी में अगर आप देखेंगे तो राजस्थान इज वेरी गुड फ्रॉम द इरिडिएशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट हरियाणा इज नॉट दैट गुड एज कम्पेयर टू राजस्थान. अगेन गुजरात इज ऑल्सो गुड फ्रॉम द इरिडियंस पॉइंट ऑफ व्यू. सो अगर आप वहाँ पे लगाते हैं तो आपको अच्छी जनरेशन मिलेगी. एंड इफ़ यू गो टू सिटी लाइक स्टेट लाइक उत्तराखंड और हिमाचल, वहाँ पे आपको जनरेशन कम मिलेगी. सो वो वेरिएशन को देखते हुए आपका वो वेरिएशन 1350, 1300 से 1500 के बीच में आ जाएगा. और अगर आप उसको मंथ के बेसिस पे देखेंगे तो वो 110 से 125 के बीच में आएंगे. सोलर विल नेवर गिव यू सेम generation on the two different places. There are so many things which I can share with you. I will share a resource with you tomorrow and you can go through that resource. I have compiled about more than 150 questions on the technical side, along with the beautiful explanation through the images and the links. You can go through those 150, 160 questions. Already a lot of students have enrolled into those practice tests. सो उनको करने के बाद आपके जो बेसिक्स हैं वो और क्लियर हो जाएंगे. एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ. आई डोंट वांट टू स्पेंड मोर टाइम इनटू इट बिकॉज माय इंटेंशन इज टू वर्क आउट ऑन द डिफरेंशियल मॉडल.
But let us say you put up a plant in Delhi and you put up a plant in Germany. Very interesting question. Let us see what comes out of it. You are putting up a plant in Delhi and you are putting up a plant in Germany. Same plant, same material, everything same, ditto जिसको बोलते हैं ना, hoobahu same. Everything is absolutely same. And let us say the irradiance is also same. The sun is giving same irradiance in Delhi and same irradiance in Germany. Okay, although it is not possible, but we are just assuming a case. Let us say the plant is same, irradiance is same. Only the temperature is change. Only the temperature is change. Rest all is same. Now, what do you think? Which plant will give you more power? Delhi plant will give you more power, or Germany plant will give you more power? Please answer your question and uh, don't hesitate to give your answer. Give your answer. Doesn't matter whether it is right or wrong. What does matter is whether I am applying or not. What does matter is whether I am participating or not. What does matter is whether I am present or not. What does matter is whether I am willing to learn or not. What does matter is whether I am raising my hand or not. So absolutely right who have written Germany, because why Germany? Because solar power plant works on the basis of light. It doesn't works on the basis of heat. If the light is same in both the cases, दिल्ली में भी उतना ही प्रकाश आ रहा है जितना प्रकाश जर्मनी में आ रहा है. एंड बट होगा क्या, जर्मनी में टेम्परेचर कम होगा. दिल्ली में टेम्परेचर 47-48 डिग्री है, जर्मनी में टेम्परेचर 15 to 20 डिग्री है. व्हाट इट विल हैपन, हायर द टेम्परेचर your product output goes low, and when your product output goes low, you are getting the less generation. So what my point here is कि आपका टेक्निकल जब स्ट्रांग होता है तो देन यू कैन आस्क फॉर दीज पॉइंट्स आल्सो. एंड यहाँ पे जो मेन पॉइंट है कि जर्मनी में जब टेम्परेचर कम होगा तो सोलर पावर प्लांट आपको ज़्यादा आउटपुट देगा, बिकॉज जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है वो नेगेटिव है. टेम्परेचर बढ़ने पर सोलर पावर प्लांट का आउटपुट कम हो जाता है. सो दिस इज द पॉइंट. आई विल शेयर द रिसोर्स विद यू टुमारो. यू कैन एनरोल इन दैट रिसोर्स. इट इज़ अ लाइफ टाइम रिसोर्स and go through the explanation. You will find lot of things, and you will be getting, I would be keep on adding into that resource. You can go through it and you will find a lot of clarity into it. Now I believe that the Sir, CUS, the optimum temperature or the best temperature for solar generation, is it around 20 to 22 degrees? it is actually, the question is like that, what is the standard test condition, STC? Now if you remember, there was an advertisement from the Bajaj in which they claim that our Bajaj or our Hero Honda will give you 90 kilometer per liter. Nowadays these advertisements are not coming, but it was a time these advertisements are very regular. So what does that mean, that 90 kilometer per liter? It means that when you are following the standard test conditions, like you are riding at 40 kilometer per hour first, then you don't have any brakes, you don't have any speed breakers, you don't have any turns like left and right, you are driving straight, and the gentleman who is driving is not more than 40 kg of weight. These all are standard test conditions, and under those test conditions you get the result. In the case of the solar, the standard test conditions are like this, that you have the irradiance of 1000 watt per square meter. आपका जो सूरज का प्रकाश आ रहा है वो 1000 watt आ रहा है, और आपका जो सेल का टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है. एंड प्लीज be aware, when we are talking about the cell temperature, it is always 25 to 30 डिग्री हायर देन द एम्बियंट टेम्परेचर. अगर आपका एम्बियंट टेम्परेचर दिल्ली में 45 डिग्री सेल्सियस है, 45 degree Celsius, your cell temperature is going to be 70 degree Celsius. And what is standard test condition is asking? Standard test condition is asking you to go for 25 degree Celsius of cell temperature. तो 25 degree Celsius of cell temperature के लिए आपका जो ambient temperature है वो आपका
ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो और जीरो से स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर हो सकता है. सो पॉइंट हेयर इज कि अगर आपका सेल का टेम्परेचर इतना लो होगा तभी वो आपको उतनी जनरेशन दे पाएगा. अदरवाइज जो आप 330 वॉट पीक का पैनल देखते हैं, दैट 330 वॉट पीक पैनल इन दी scenarios, general scenarios, never give you more than 80% of output. It means 330 का 80% अगर आप निकालते हैं तो it comes out to be 270 something or 260 something. It will never give you more than 260 watt. Now it is very good that you have asked this question, because our next point is coming to this only, because we are going to talk about the performance, and this should also be clear to you. And what is performance? यहाँ पे हम लोग PR कैलकुलेशन पे आ जाते हैं. Now these things will be clear to you. We will jump straightly into the calculation so that you can get the essence. Now a 100 kilowatt solar power plant is giving you 30 kilowatt. एक 100 kilowatt का solar power plant है, आप छत पे जाते हैं 11 बजे. Now imagine a very practical scenario. A 100 kilowatt solar power plant is installed on the rooftop. You go to the rooftop and वहाँ पे आपको inverter आप देखते हैं, and inverter tells you that the solar power plant is producing 30 kilowatt peak. Okay, now you apply your solar irradiation meter, and that meter tells you कि सोलर का जो सूरज का जो प्रकाश आ रहा है that is 400 watt per meter square. It means कि आपको पता लग गया कि सूरज का प्रकाश, because ultimately the sun's light is the fuel for your solar power plant. And now you know that instead of getting 1000 you are getting 400 only. Now this is the formula for PR percentage, कि इसको अगर PR को कैलकुलेट करना हो तो ये आपका फॉर्मूला है. मैं इस फॉर्मूले को भी, आई विल नेवर एडवाइज यू टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, बिकॉज आई विल गिव यू अ डायरेक्ट ट्रिक टू रिमेंबर दिस कैलकुलेशन. बट लेट अस सी दिस फॉर्मूला फर्स्ट टू अंडरस्टैंड कि करने की कोशिश क्या है. आउटपुट एक्टिव पावर इज 30 किलोवाट. जितनी भी आपको एक्टिव पावर मिल रही है उसको आपने ऊपर रख लिया है, मल्टीप्लाई किया है उसको 1000 के साथ, और डिवाइड में क्या है, प्लांट की जो कैपेसिटी है दैट इज योर 100 किलोवाट, और जो सोलर रेडिएशन आपको मिल रहा है वो आपका 400 वाट, वो नीचे ले लिया है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला you get 30 multiplied by 1000 divided by 100 which is plant capacity and 400 which is your watt irradiation from the sun. Now if you get this, you get 75% of the ratio. What does it mean 75%? It means कि उसको जितनी भी लाइट मिल रही है उस लाइट का 75% वो कन्वर्ट कर पा रहा है. सोलर पावर प्लांट को जितनी भी लाइट मिल रही है उस लाइट का वो 75% कन्वर्ट कर पा रहा है. अब इसी एग्जांपल में एक और चीज़ लेते हैं. लेट अस से इस सोलर पावर प्लांट को सेम 400 वाट का इरेडिएशन मिल रहा है, बट ये प्लांट को 3 महीने हो गए हैं, इट इज़ नॉट क्लीन्ड, उसके ऊपर मिट्टी की एक परत जम गई है. The layer of the dust has taken place on the solar power plant. Now the penetration of the light is not proper into the cells. Cells के अंदर वो light properly नहीं जा रहा है. What will happen? It will result in the lower output. And let us say the output is reduced to 20 kilowatt. Output कितना reduce हो गया है आपका? 20 kilowatt हो गया है. And the moment it is 20 kilowatt, your power output is now, PR is now 50%. So what does it means? It means कि मेरा जो सोलर पावर प्लांट है उसको हमेशा PR जो है 75 से 80% देना चाहिए, 75 से 80%. But if it is lesser than 75 to 80%, there would be some reason. Either some of the panels are, there could be multiple reasons. A, उसकी क्लीनिंग ढंग से नहीं हो रही है. B, उसकी कुछ स्ट्रिंग्स बंद हैं. लेट अस से कि आपका जो प्लांट है उसमें से 10 स्ट्रिंग में से एक स्ट्रिंग बंद हो गई है. और थर्ड, इट कुड बी दैट सम पैनल्स आर कमिंग इन द शेडो. फोर्थ, इट कुड बी पॉसिबल दैट सम पैनल्स आर डिस्कनेक्टेड, उसका केबल टूट गया है वहाँ से. ऑल दोज थिंग्स कैन बी देयर, and due to that your PR would drop. So a good solar power plant will always have PR in the ratio of 75 to 80%.
So this is the role of PR. Now let us take one more example. Now in this particular case, your output power is 192 kilowatt peak and your solar irradiation is 800 watt. What is your plant capacity? Your plant capacity is 300 kilowatt. Now if you will calculate this, you will find that your PR is coming 80% by applying this formula. So again, 80% is a good capacity, 80 good PR. Now let us take one more example. Now same example is quite, the irradiation is 800 watt. Irradiation is 800 watt and your plant output is 200 kilowatt and your plant capacity is 500 kilowatt. What it is coming? Your PR is only 50%. So is this calculation of PR clear to everyone? Any doubt? किसी को कोई भी doubt हो? Thank you so much. A lot of participants are now responding. I can see that 7 to 8 participants. I can expect more because right now we have, how many participants we have? We have 31 participants and some participants from the CBIP side also. So in together we have 40 people, and if we are getting a response of 7 to 8 people, so थोड़ा सा नाइंसाफी है. So I would request all the participants to be please more participative, because all those things which I'm trying to share with you, my intention is that all those things should come on your tips and become wisdom with you. So यहाँ पे if you wish to remember the PR calculation, you need not to remember any formula. What is the simple rule is? The simple rule is you have to figure out two ratios. आपको अपने दिमाग में दो ratios निकालना है. The first ratio is कि आपका प्लांट कितने किलोवाट का है और आपका आउटपुट कितना आ रहा है. So let us take the first example. The output was 30 and plant size was 100. So what is ratio A? What is, you can say, capacity ratio? You can see capacity ratio is 30 by 100, which is 0.3. Okay, this is the first ratio, you have to figure it out. Now the second ratio you have to figure out is irradiance ratio. आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, दो रेशियो तो आप निकाल ही सकते हैं वहां से देख के. व्हाट इज irradiance रेशियो इज, यहाँ पे आपको पता है 400 आपको मिल रहा था और 1000 स्टैंडर्ड होता है, तो व्हाट इज irradiance रेशियो इज 0.4. नाउ ये आपके पास दोनों आ गए. अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यू हैव टू डिवाइड रेशियो 1 विद रेशियो 2. व्हाट इज रेशियो 1? 0.3 डिवाइडेड बाय 0.4 and you can simply say that it is 75%. आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, CUF का कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, PR का कोई फॉर्मूला याद नहीं रखता है. ऑलवेज फोकस ऑन what is the logic behind the formula and then just try to summarize and memorize that formula into your mind, and you will never ask for the reference. You will be always sure while quoting any comment, quoting any decision, you will never say that I need to check whether the formula is right or wrong, whether it will come in denominator or numerator, whether the 100 will come above or low. So you will always remember it. Is it clear to everyone to calculate the PR ratio? Because as a financial modeler, you might come across some situation where some PR ratio you might would like to comment whether the plant PR ratio is low, whether the plant PR ratio is very high, and you would have the clarity on this. So everyone is clear for this PR ratio? Should I give you an example? No, I am putting up an example. I request all the participants to give me both the ratios and the answer. So the question is, output is very simple question. Output is 60 kilowatt, plant size is 200 kilowatt, and
radiance is तो दिस इज योर क्वेश्चन। आप इसको वर्कआउट कीजिए और मुझे आंसर बताइए। इसी को कॉपी करके इसी में आंसर कर दीजिए। Wonderful, Junaid. Absolutely right. I'm very happy to see that the participants have got the gist of calculating the PR ratio. And believe me, if you are able to formalize the things on your own, you would always remember it. You need not to worry on the formulation part. Absolutely wonderful to see Chitra Lekha ji, Shravan Kumar ji, Dushyant ji, Varun ji, Sanjay Rawat ji, and there could be some more participants. Shashi Kanta Das ji, Ram Babu Singh ji, Shah Nawaz ji. Lot of participants from the Mekong side. Wonderful to see that they are sharpening their skills for the financial modeling, because along with the technical grip, the financial model is also very, very important. Yes, Nazir ji, it is R1 is 0.3, R2 is 0.37, and when you divide 0.3 by 0.37, you got PR as 80%. Wonderful to see that all the things, all the formulation, all the calculations are now your tips, and you can comment on anything. You can check out now the specific yield is known to you for per year basis 1350 से 1500 के आसपास. It would be around this. For specific yield per month it is like 100 से 125 के बीच में, and for a specific yield per day it is like 3 to 4.25 something. Wonderful, Arun Minji, wonderful. So Mekong team is taking full benefit of this workshop by giving a huge participation. A, they are participating in the numbers. B, they are participating in the chat box also. A very good gesture of their involvement, because involvement leads to evolvement. So wonderful to see now our solar basics are also clear. A lot of stuff is there. I will share the resource with you tomorrow, और उसके बाद आप उसको Saturday Sunday you have उस resource को कीजिएगा, and you will get a lot of clarity after doing that resource. 160 plus question will sharpen your knowledge of the technical side of the solar power plants. So with this, our calculations are now done. Rest is about the technical part of it, which we need not to go into. Now let us jump into the important point of the financial modeling, which I am wishing to touch upon today, so that tomorrow we can go it into detail. So this is the Excel sheet. So Varun ji, are you able to see my screen? Yes, sir. This Excel sheet you are able to see, na? Not Excel, sir. It's PPT, specific yield of the month. This Okay, slide so- is visible. Yeah. Let me change it to the PPT or Excel. So we are just getting into this. So let me check अगर किसी को कोई doubt ना हो. So everyone is clear about PR, CUF and specific yield part. Everyone is clear. Any doubt from anyone? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, बिकॉज अभी हम लोग उसके लिए जा रहे हैं. वी विल डू दिस शीट फॉर 15 मिनट्स एंड देन वी विल गो गेट बैक टू सम क्वेश्चन एंड आंसर. माय इंटेंट इज कि आज थोड़ा सा इस फाइनेंशियल मॉडलिंग की जो शीट है उसको स्टार्ट कर लेते हैं, बिकॉज आपका सोलर का बेसिक्स हो गया है. आप देयर इज लॉट ऑफ सोलर का टेक्निकल्स में बहुत कुछ है. आई विल शेयर द रिसोर्स विद यू. उसमें 165 प्लस क्वेश्चन है, आप उसको कीजिएगा एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी इनटू दिस. This is a bonus resource other than the financial modeling.
So I have 2 bonus resources for you. I will share it with you. I request कि उनको आप immediately 1 week के अंदर close कर लीजिएगा. They will require 4 hours of dedication from your side, but if you do it for 4 hours, your solar basics from the technical aspects would be very much in a very strengthened manner. और जो फाइनेंशियल मॉडलिंग की शीट में आपके साथ शेयर करूंगा उसको भी आप वर्कआउट कर लीजिएगा. सो अभी आई एम नाउ विशिंग टू गो इनटू द एक्सेल शीट. इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन, सो देयर इज वन रेज हैंड फ्रॉम any question from anyone whatever we did today. या एनपीवी आईआरआर को लेकर कोई क्वेश्चन, सीआर पीयूएफ किसी को लेकर कोई क्वेश्चन? Should we go ahead with this एक्सेल शीट शुरू करें? Please let me know if Excel sheet is to be started. Please type yes in the chat box. Okay. So wonderful. Excel sheet is to be started. So here we are going to start the Excel sheet. So is this Excel sheet present to you, Varun ji? Yes, sir, visible. Okay. So as we are going to start this financial modeling sheet, let me share first of all what is the philosophy with which I am going to interact with you, with which I am going to share it with you. The analogy is कि generally in the 2 aspects, and correct me if I am wrong, I am going to ask you a question. 2 एस्पेक्ट ऐसे हैं जिनमें मैंने देखा है कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं या जो टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग होते हैं उनमें एक बहुत बड़ा फियर फैक्टर होता है, उनमें एक बहुत ही अनकंफर्टेबल जोन होता है, एक बहुत हेजिटेशन होता है. व्हाट आर दोस 2 एरियाज? पहला एरिया होता है फाइनेंशियल मॉडलिंग, फाइनेंशियल लाइक नॉट अबाउट मॉडलिंग बट फाइनेंशियल्स के बारे में. व्हाट इज बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑल दोस थिंग्स एंड सेकंड होता है लीगल डॉक्यूमेंट्स को लेकर के. जब हम बात करते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट की, जब हम बात करते हैं किसी एग्रीमेंट की, जब हम बात करते हैं किसी डॉक्यूमेंट में जिसमें लीगल फ्रेजिंग होती है. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? इन 2 एरियाज को लेकर कुछ स्फीयर में कुछ डर रहता है या नहीं रहता है? इफ यू फील कि यस कुछ डर रहता है, बिकॉज हमारे इंजीनियरिंग करिकुलम में इन दोनों एरियाज को टच नहीं किया जाता है, इन दोनों एरियाज को आइसोलेटेड रखा जाता है. हमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं दी जाती है फाइनेंशियल्स की, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं दी जाती है इस प्रकार से. तो इफ यू फील लाइक कि ये थोड़ा सा स्केरी है, देन प्लीज टाइप यस सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि कितने पार्टिसिपेंट्स उसके साथ एग्री करते हैं. तो चोपड़ा जी इज गिविंग अस अ लाफिंग जेस्चर. यस, बहुत डर रहता है. So I have got only 5 to 6 response. What should I consume? What should I understand from the other participants? बाकी के लिए what do they feel? किस प्रकार से रहता है? So I'm sharing it from my perspective. When I completed my engineering and when I get into the solar, I have to deal with these financial things. I have to deal with this legal terms, PPA. I have prepared a course separately for the PPA things because what I felt that कि जब मैंने उसमें time लगा के उसको समझा किया and over a period what I realized that कि ऐसा कुछ मुश्किल वाला बात नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है कि that we engineers can't do it. The only thing is that being an engineer, our mind is stuck to this alpha, gamma, beta only, and we are just confining ourselves to the spheres कि हमें यार इंजीनियरिंग का ही करना है. But the growth जो छुपा होता है, वो growth छुपा होता है when we are prepared from the holistic point of view, from the all around point of view. और उसमें financial is very very important. If I ask you कि कौन से लोग ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ पोजीशंस के तौर पे अगर हम बात करें, सीईओ के तौर पे हम लोग बात करें, तो वो किन के पास ज़्यादा पोजीशंस जाती हैं? वो पोजीशंस ज़्यादा जाती हैं फाइनेंशियल लोगों के पास. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. एम आई राइट कि ज़्यादा अपर लेवल की पोजीशंस फाइनेंशियल लोगों के पास जाती हैं, वो हैव द फाइनेंशियल नॉलेज. एंड आई विल आस्क यू वन मोर क्वेश्चन विच विल ओपन योर आईज. आप उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज अगर सन is there, nobody can say कि this light is not from the sun.
सो माई क्वेश्चन टू यू, हाउ मेनी लायर्स यू हैव सीन कि वो पॉलिटिकल तौर पे बहुत अच्छे और ऊपर के लीडर बन जाते हैं? अरुण जेटली was a lawyer actually, but he was the finance minister of India. Okay, P. Chidambaram was the lawyer and he was also the finance minister of India. Kapil Sibal is also a lawyer from India. Okay, so what I am trying to tell you that the financial acumen and legal acumen both are very important for your growth, for our growth. And unfortunately, being an engineer, we always think about them, यार ये हमारे चाय का कप नहीं है, it is not our cup of tea. Okay, we will not get into this. ये फाइनेंशियल वाले तो अकाउंट्स का ही देखेंगे, ये हमें इसमें नहीं पढ़ना है. ये तो यार लीगल वाले देखेंगे, हमें इसमें नहीं पढ़ना है. But if we built up our financial acumen, our legal acumen, then we shall be able to take up more participation, and more participation will actually pave a way forward for our growth, and we will be able to contribute more into the organization, into the society, into the nation, and always will be able to find something good for our own families. So what my point here is, I am trying to deliver all this knowledge to you from the perspective that we always open to accept the financial knowledge. I'm sorry yaar if I pronounced it wrongly, but I just meant to say lawyers. Lawyers means वकील लोग जो होते हैं. But that's not a fact, you know, lawyers are always, you know, most of the lawyers are on the lawyer side also. So with due respect to all the lawyers. So what I was trying to tell you that financial acumen and the legal acumen is very, very important. I have dedicated a lot of time to prepare a resource for building up power purchase agreements, and in that I have involved all the basics of the contract drafting also. I remember I was asked to make a contract for my own consultancy a long back, you know, and I was shivering कि क्या लिखूं इसमें, क्या ना लिखूं, you know, कोई ऐसी चीज़ ना लिख दूं जो जो फंस जाऊं जिसमें, या वो कोई ऐसी चीज़ लिखवा ले जिसकी मेरे को समझ नहीं. एंड आई कॉल्ड माई लॉयर फ्रेंड एंड आई सेड यार मेरे को इसमें आप हेल्प कर दो. एंड इट वाज ओनली 4 पेज, 4 पेज का वो डॉक्यूमेंट था. एंड आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू साइन इट. मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं था उस टाइम पे कि मैं उसको साइन कर लूँ. नाउ we are doing PPAs which is more than 30, 40, 50 pages, and complex clauses are mentioned into it. Once we apply ourselves, and now through those PPAs we are able to get good, you know, remuneration also from our respective clients. So what my point here is that once we built up our financial acumen and legal acumen, and when some blending of this results into a product, results into a project, results into your command on the subject, then ultimately you will be getting the returns of it. So my humble request is, never consider financial as out of box, legal as out of box. प्लीज डू इन्वॉल्व इनटू इट. लीगल के तौर पे आप अपने रेंट डॉक्यूमेंट है आपके पास कोई, उसको जरूर पढ़िए. कोई कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट है आपके पास, उसको जरूर पढ़िए. अपनी नॉलेज को बढ़ाइए उसके अंदर. फाइनेंशियल तौर पे भी अप्लाई दिस फाइनेंशियल थिंग्स इनटू योर अदर एस्पेक्ट्स. किसी भी प्रकार का और कोई प्रोजेक्ट है उसमें भी इस फाइनेंशियल मॉडलिंग को आप जरूर इंट्रोड्यूस कीजिए, उसमें समझिए. एंड देन यू माइट कम अक्रॉस किसी जगह पे कोई लॉस हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंड यू कैन पॉइंट आउट दैट लॉस. एंड once you point out that loss, ultimately your organization would be understanding your potential, and you will be getting some more opportunities to explore new areas. So Tulsidhar ji, for building up, I would suggest that you can build up reading about the contract drafting. You can study whatever the agreements, documents available in your area in terms of your office or your रेंट एग्रीमेंट हो सकते हैं, किसी और प्रकार का कोई एग्रीमेंट आपके वहाँ पे ऑफिस में, आप उसको पढ़ सकते हैं, जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन को आप समझ सकें, जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्यों लिखी गई हैं उसको आप समझ सकें. इन माय कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग कोर्स, इन माय पीपीए कोर्स, आई स्टार्ट विद द व्हाई कि ये पीपीए क्यों करना है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस पीपीए, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. अब उस पीपीए को करने के बाद क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं,
क्या क्वेश्चंस को हमें रिजॉल्व करना, बिकॉज द पीपीए इज मेंट फॉर रिजॉल्विंग ऑल द थिंग्स विच कैन कम इन द फ्यूचर, जो कि एक डिस्प्यूट की वजह बन सकते हैं। उन डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व करना है, ऑल दोज थिंग्स पार्ट ऑफ द पीपीए। आई विल नॉट टेक मच टाइम इनटू इट बिकॉज दिस इज दैट इज ए सेपरेट कॉन्टेक्स्ट, बट माय पॉइंट इज दिस की स्टार्ट विद द वाई पार्ट, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दोज थिंग्स। जैसे हमने फाइनेंशियल मॉडलिंग में भी स्टार्ट क्यों किया है, बिकॉज मुझे पता लगाना है कि वो इन्वेस्टमेंट मुझे करनी है कि नहीं करनी। माई होल पर्पस ऑफ फाइंडिंग आउट IRR और NPV इज कि मुझे यही पता करना है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी। इफ माई NPV इज पॉजिटिव आई विल डू इट, इफ माई NPV इज नेगेटिव आई विल नॉट डू इट। सो माई वाई पॉइंट इज कि मुझे पता लगाना है कि वो करना है कि नहीं करना। एंड इन योर लीगल एक्यूमेंट you find your why it is happening, what will go wrong if it doesn't happen, अगर ऐसा ना हो गया तो ऐसा हो गया तो क्या होगा। all those questions come into the legal documents. So we can get on one to this, Tulsidhar ji. I will help you. So let's get back to the Excel sheet here. So whenever we are trying to build up a financial model, और यहाँ पे sorry I just went out of the way. My point was this कि what is the philosophy, analogy यहाँ पर क्या है कि जब हम लोग गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो जब हम लोग गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हम लोग बिल्कुल फोकस होकर गाड़ी चलाते हैं। हम लोग अपने साथ में बैठे बंदे के साथ बातचीत भी नहीं कर पाते। वी से यार आप चुप कर जाओ थोड़ी देर के लिए, मेरे को गाड़ी चलाना है, तो हम लोग बाद में बात करेंगे, बिकॉज यू आर 100% फोकस्ड ऑन दी रोड एंड ऑन योर ड्राइविंग व्हील। बट जब आपकी मास्टरी हो जाती है तो उस टाइम पे आप गाड़ी चलाते हो, मोबाइल पे भी बात कर रहे होते हैं, साथ में आपके मैडम, भैया, भाभी, ब्रदर, फादर, एनीवन इज देयर, सन, डॉटर, एवरी, उनके साथ भी आप बातचीत करते हैं। उसके बाद साथ ही साथ में आप म्यूज़िक प्लेयर के अंदर म्यूज़िक भी चेंज कर रहे होते हैं, और अगर आपको विंडो ऊपर नीचे करना है तो आप विंडो भी ऊपर नीचे कर रहे होते हैं। यू आर डूइंग मल्टीपल टास्क वाइल ड्राइविंग द कार। सो व्हाट माय पॉइंट हियर इज कि जब हम लोग फाइनेंशियल मॉडलिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो मैंने एक एक आइटम को स्प्लिट कर दिया है। मैंने हर एक आइटम को, अदरवाइज अगर आपको मैं एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सा फाइनेंशियल मॉडलिंग का शीट दिखाऊंगा तो आपको उसमें से थोड़ा सा हेजिटेशन आ जाएगा, थोड़ा सा फियर आएगा। सो इन ऑर्डर टू रिमूव द फियर, इन ऑर्डर टू कीप इट, आई रिमेंबर आई सेड इन द बिगिनिंग कि मैंने इसको बहुत सिंपल तरीके से, नाउ यू वुड सी कि व्हाट सिंप्लिसिटी इज, उसको बहुत छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया है। मैनेजमेंट सेज व्हेनेवर वी हैव टू एक्सप्लेन एनीथिंग, try to break it in a smaller parts, because whenever we are trying to explain the larger chunk, it is always complex to explain it, and when we are explaining in the smaller chunks, it is always easier to digest and absorb and move forward. So strategy here is कि मैंने आपको कोई बड़ा शीट नहीं दिखाना है। I will be presenting the very small parts to you in one after the another, and that gradually will build up your फाइनेंशियल मॉडलिंग अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद कल मैं आपको कॉम्प्लेक्स वाला बड़े वाला शीट शेयर करूंगा, सो दैट वंस यू आर क्लियर अबाउट कि कैसे गाड़ी को आगे पीछे लेफ्ट राइट मोड़ना है, उसके बाद देन यू कैन गो एट योर ओन, उसके बाद आप बिल्कुल सही तरीके से उसको कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द स्मॉलर पार्ट्स। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आई हैव दिस एक्सेल शीट इन विच you can see here, first is the cover page, second is the input tab. Now A is the debt tab, B is the income tab, C is the expenses, D is the net income, E is the depreciation and taxes, and F is the final cash inflow. तो मैंने इन सबको स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है so that you can get a clear understanding. Otherwise अगर आप कॉम्प्लेक्स तौर Sir, पर the screen is not visible, sir. सॉरी बट स्क्रीन तो Excel sheet is visible or not? It was visible, sir. Okay, okay, no problem. Now, to whom the screen is not visible? Now it's visible, sir. Okay, wonderful. So, since you missed, I am just explaining it again. So, I have divided this sheet, otherwise it is a single sheet, single tab. I have divided into several parts. The first part is cover page, second part is inputs, the third part is the debt, the fourth tab is income, the fifth is expenses, then net income, then depreciation and taxes, and then final cash inflow. Now we will see each one of the part and we will see what does it mean. सबसे पहले the cover page is meant for giving us the brief information about the project. What is the brief information? We will start it one by one.
when the project name is ABC Solar Project, author XYZ, जिसने इसको बनाया है, email xyz@gmail.com. Now the project cost in lakhs, project cost is there 200 lakhs. Now you can see that all these cells are green. All these cells are green. It means that they are asking for input. यहाँ पे आपने input इनको दिया है, right? And project size, project cost is 200 lakhs. Project size is 0.5 megawatt peak, or you can say 500 kilowatt. Debt ratio. Now, in a solar power project, we have assumed that debt 80% of the loan amount for the project is availed. Equity is 20%. PPA का जो duration है that is 25 years. Debt का जो duration है, आपने जो loan लिया है वो 8 years के लिए लिया है. Tariff per year, टैरिफ पर यूनिट सॉरी इज 4 रुपीज ओनली, यानी कि आपको 4 रुपए पर यूनिट का टैरिफ मिलेगा. डेप्रिसिएशन बेनिफिट यस आप क्लेम कर सकते हैं. आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन एवरीथिंग. डेप्रिसिएशन परसेंटेज इज 40%, टैक्स स्लैब रेट इज 30%, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज, जो आपको IRR मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 13% मिल रहा है. नाउ ये है कवर पेज कि अगर आपने किसी को ये प्रेजेंट करना है और उसकी फाइनेंशियल नॉलेज अच्छी है तो ये देखने के बाद उसको क्लियर हो जाएगा कि इस प्रोजेक्ट के क्या बेसिस हैं, इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लग रहा है, डेप्थ कितना है, ड्यूरेशन कितनी है और IRR कितना आ रहा है, उसको क्लियर हो जाएगा. दिस इज अ समरी एक्चुअली. नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू द इनपुट्स कि इनपुट्स में हमें क्या कुछ फिल करना होता है. ये जो फाइनेंशियल मॉडलिंग का शीट है, please note that this is a basic sheet only, just to build up the fundamentals and basic. मैंने इसमें से कुछ चीजें नहीं भी इंक्लूड की हैं. The purpose is not to complex the learning in the beginning. Once you have the good understanding, we can move forward to the next level. So यहाँ पे next sheet में जब inputs की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए कि कैसे inputs आते हैं. जो भी सेल आप येलो देख रहे हैं, all those cells are meant for input. Now whenever we are doing a financial modeling, there are always certain rules. तो certain rules के मुताबिक जो भी cells आपके input के तौर पे आ रहे हैं, you give them a different color. और जो cells आपके calculate होके आ रहे हैं, you give them a different color. So जो cell मेरी input है मैंने उनको yellow color दिया है, and जो cell मेरे calculate होके आ रहे हैं, I have given them green color. So let us see what is my input. So project capacity में if I am asked, I have filled up 0.5 kilowatt. So I am just filling up the inputs here so that you can have a feel किस प्रकार से इसको किया जाता है. तो specific yield you remember we took it as 1300 से 1500. तो यहाँ पे मैंने उसको specific yield को 1500 किलोवाट पीक पर ईयर ले लिया है. Now it is giving me 7.5. उसने बता दिया है कि per year I will be getting 7.5 lakh units. How does it come? It comes 1500 multiplied by 500. Now generation degradation is the point which is like every year. If in the first year you are getting 1500 unit, in the next year you will be getting some lesser units because of the degradation. And what is the degradation per year? It is taken as 0.7%. So I have taken a degradation of 0.7% here. Now project cost is taken as 200 lakhs. 200 लाख यानी कि 2 करोड़. डेप्ट परसेंटेज as I mentioned you, it is taken as 80%. Since debt is 80%, equity is automatically coming as 20%. Now the equity amount is 40 lakh rupees. How did it came? Because 200 लाख का आपका टोटल कॉस्ट है, तो 200 लाख के टोटल कॉस्ट में से 80% यानी कि 1.6 करोड़ और 160 लाख आपने लोन लिया है, तो what is left 40 lakh. So it is green cell because it is calculated. Now the next is PPA duration. PPA duration is 25 years, that is input 25 years. Now the tariff per unit is 4 rupees. आपका जो भी टैरिफ का रेट है वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं. Then escalation in tariff. Now there are two types of tariff. The tariff A is fixed for the 25 years. आप 2022 में खड़े हैं. If you go into 2047, you will be keep on taking 4 rupees per unit. The second thing is you are getting into escalation in tariff in which you put forward a increment of let us say 3% to 4% on the base value. Let us say आपका base value 3 rupees 50 पैसा है, तो आपका tariff जो है every year it will increase by 4%. Now
these are the PPA inputs, and you can see here every segment is presented into some specific. For example, segment A is project particulars. यहाँ पे अगर आप देखेंगे segment A is project particulars, segment B is for PPA inputs, okay, segment C is for loan inputs. अगर loan की inputs को आपको एक ही जगह पे देखना है तो you can see here. Now, since my debt duration is 8 years and my interest rate is 7%, my number of installments are going to be 96. Again, it is a calculated value. 8 into 12 is 96. Now, coming to the taxation part, it is asking whether the depreciation benefit is applied or not. Depreciation benefit will be applied, but in the case of non-profit organization, society, trust, educational trust, mandir, masjid, gurdwara, in all those things, in all these areas, the depreciation benefit is not applicable. So if depreciation benefit is not applicable, तो depreciation rate भी नहीं आएगा. Now after that, O&M expenses. O&M expenses में आपने maintenance charge लिया है 3 lakh rupees. It means for maintaining 500 kilowatt peak, you would be requiring 3 lakh rupees per year. Insurance charges is 0.5 lakhs rupees per year. And yearly escalation means 8%, because for the maintenance you will be hiring the manpower, and as you are going to hire the manpower, the next year there is going to be increment in their salaries, and for that perspective you have taken 8% escalation on per year basis. So this is broadly your input sheet. So I hope this input sheet is clear to everyone, because it is created in a very simple to and easy to understand manner with the proper segments for loan inputs, taxation, O&M. So is there any doubt to anyone? If there is any doubt, please let me know. Please put your query into the chat box or on the mic. Is there any doubt? If there is no doubt, then please type no so that I can understand and I can move forward. So Keshwam ji, the standard percentage for considering O&M is something like 6 to 7 lakh rupees per megawatt. So the tariff rate is pre-decided because we are given a rate of 4 rupees and we are wishing to know what would be IRR. What would be my IRR? So now with this 4%, 4 rupees of rate, we will be seeing what IRR we are getting. So does that answer your query, Chitra Lekha ji? Yes, Briju Krishnan ji, we can speak later on insurance and hedging, not right now. So is it decided in the PPA agreement? So first of all, let us say you are wishing to calculate a project in which you are wishing कि कितना tariff होना चाहिए. So उसमें आपका parameter क्या होगा कि मुझे कम से कम 16% IRR चाहिए. तो अगर आपको 16% IRR चाहिए तो आपने let us say 4 rupees से start किया. तो 4 रुपीज़ से स्टार्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि आपको लेट अस से इनपुट्स में ही जाते हैं और आपका 4 रुपीज़ की जगह हमने 5 रुपीज़ कर दिया, तो आप यहाँ पे देखिए आपका जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. तो अभी यहाँ पे हमने इसको 4.2 पहले सबसे पहले आप देख लीजिए आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना है. आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज 13% एंड योर मैनेजमेंट इज नॉट अप्रूविंग इट, एंड मैनेजमेंट इज सेइंग दैट आई नीड मिनिमम ऑफ 18%. आपने इसको 4.2 कर दिया, आपके पास अभी भी 16.22 आ रहा है. अगर आप यहाँ देखेंगे अभी भी आपकी मैनेजमेंट ने उसको अप्रूव नहीं किया है, आपने उसको 4.3 कर दिया. नाउ योर मैनेजमेंट इज सेइंग दैट it is 17.79, it is okay, it is nearly about 18% and we can go with this. So this financial modeling is sometimes you are going after the IRR, मुझे इतना IRR चाहिए ही चाहिए, और sometimes it is like this, you are offered 4 rupees, client आपसे कह रहा है कि मैं तो आपको 4 रुपये ही दूंगा, and you want to figure it out कि मेरा IRR कितना आएगा. तो आपने 4 रुपये क्लाइंट से मिल रहे थे और आपने उसको लगाया और आपको
13% का IRR आ रहा है. नाउ इट इज अप टू यू कि आप करोगे या नहीं करोगे, राइट? तो जैसे रंजन साहब कल बता रहे थे कि IRR 16 से 20% एक्सपेक्टेड है, तो अभी क्लाइंट ने आपसे बोला कि मैं आपको 4 रुपये ही दूंगा. तो अब आपको ये पता करना है कि मेरे लेट अस से एक क्लाइंट से आप मिले कि 200 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगाना है एंड क्लाइंट इज सेइंग कि आई विल गिव यू 4 रुपीज पर यूनिट. तो आपका सबसे पहला वाई पार्ट तो यही आता है ना कि वो प्रोजेक्ट मेरे को फीजिबल है या नहीं, वेदर इट इज मीटिंग माई IRR क्राइटेरिया और नॉट. तो आपने ये फाइनेंशियल मॉडलिंग किया सारा, इसमें इनपुट किया सारा, एंड इसमें इनपुट करने के बाद आपको पता लगा कि मेरा जो IRR आ रहा है इट इज नॉट 18%. So let us say 18% is your criteria. So what you will do, you will prepare this sheet, you will seek your management approval, and then you will get back to the client and you will tell him that, sir, we cannot give you lesser than 4.3. 4.3 is our minimum point. So what my point here is कि IRR का जो क्राइटेरिया है आपका, या तो वो IRR साइड से ड्रिवन होगा कि 18 कम से कम चाहिए, या फिर आपका टैरिफ साइड से ड्रिवन है कि क्लाइंट आपको इतना टैरिफ दे रहा है, क्या आपके लिए वो फिजिबल है या नहीं है. सो दीज आर द बेसिक्स. सो नाउ डज दैट आंसर योर क्वेरी चित्रलेखा जी? सो जनरली क्या होता है कि वी आर गिवन अ प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट के अंदर हमें कहा जाता है कि मान लीजिए बिड कीजिए. अब व्हाट वी विल डू, वी विल स्टार्ट फाइनेंशियल मॉडलिंग ऑफ दिस एंड देन व्हाट वी विल डू, वी विल सी कि मुझे 18% चाहिए है, और मैंने 18% करने के लिए लेटर से मैंने इसके अंदर जब मैंने इसको 4% किया, 4 रुपीज़ किया, तो मेरा 13% आ रहा था. तो मैंने इसको ग्रेजुअली बढ़ाना शुरू किया. आई ट्राइड इट फॉर 4.1. व्हाट आई सॉ, माय रिजल्ट इज कमिंग एज 14.63 विच इज स्टिल नॉट एक्सेप्टेबल. मैंने इसको दोबारा से बढ़ाया, 4.2 किया, इट इज स्टिल कमिंग 16. मेरे को अभी भी ये इट इज़ नॉट गुड फॉर मी. देन आई डिड इट फॉर 4.32. जो आप देखते हैं ना 2.79, 2.78, वो यहीं से निकल के आता है. नाउ इट इज 18.11. So if you want to get absolute 18, then it will be 4.31. So you can see here it is 17.95. So you minimum need to have 4.32 to meet with the criteria of 18%. So this is basically the calculation behind the tariff. Now we are clear with this sheet. I will just give you a gist of the remaining sheet. We will discuss it tomorrow in detail. So the first part is debt. डेप्ट में क्या करते हैं हम लोग, डेप्ट में वी नीड टू प्रिपेयर कि एवरी ईयर हाउ मच ऑफ पेमेंट इज गोइंग टू दी, you remember we need to figure out outflow. We need to figure out outflow, and for measuring the outflow we need to figure out कि कितना हमारा इंटरेस्ट जा रहा है और कितना हमारा प्रिंसिपल जा रहा है. Just give me one sec, there is some, just give me one sec, there is some call which I need to respond to, call back them later. Just come. Hello. Yeah, I'm sorry, I just have to take that call. So in the debt repayment sheet, we focus on what is the outflow, कितना पैसा मेरा बाहर जा रहा है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के तौर पे. I will explain this sheet to you in a detailed manner tomorrow, and this sheet will actually help you a lot. This sheet, debt sheet, will actually help you a lot whenever you have to take a loan for the car, for home, or for any other purpose. यू विल ऑलवेज सी कि इस शीट में जो बेसिक्स आपके कल क्लियर होंगे उसके बेसिस पे आप लोन्स के लिए बहुत अच्छा नेगोशिएट कर लोगे उनके साथ. सो बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप हो जाएगा. सो दिस इज योर डेप्ट शीट. द सेकेंड शीट इज बी, इनकम. व्हेन यू आर सेलिंग द सोलर पावर प्लांट टू द यूजर, दे आर गोइंग टू मेक पेमेंट टू यू, और उस पेमेंट में डिग्रेडेशन की वजह से एवरी ईयर सम स्मॉल लॉस इन द यूनिट्स, किस प्रकार से वो होता है, हाउ डू वी कैलकुलेट, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. वहां से आपकी इनकम आएगी. एंड देन वी विल वर्क आउट ऑन द एक्सपेंसेस शीट. व्हाट आर माय एक्सपेंसेस? माय एक्सपेंसेस इज O&M, my expenses is insurance and miscellaneous expenses, and my expenses is interest. Whatever the interest I am paying on the loan is actually my expense, so I will also factor those. और वो interest मेरा कहाँ से निकल के आएगा?
फ्रॉम दिस शीट, डेप्ट शीट में से मेरा इंटरेस्ट निकल के आएगा कि मैंने कितना इंटरेस्ट पे किया है. देन वी विल सी व्हाट इज माय नेट इनकम. नेट इनकम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो बी यानी कि ये जो सब हेड बी की जो शीट है और सब हेड सी की जो शीट है उसमें से मुझे दोनों को माइनस करना होगा टू अराइव एट इनकम माइनस एक्सपेंसेस. देन व्हाट इज ई, ई इज योर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, कि कितना मेरा डेप्रिसिएशन होगा, उस डेप्रिसिएशन के कॉरस्पॉन्डिंगली मेरा टैक्स कितना रिड्यूस होगा. ये बड़ी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है एंड अगेन इंजीनियरिंग साइड पे होने की वजह से हमें ये सारी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी तरीके से क्लियर नहीं होती है. आई विल ट्राई टू क्लियर इट एज मच एज पॉसिबल. एंड देन फाइनली जब मेरा व्हाट इज ए इज टेलिंग मी आउटफ्लो जो मेरा इंटरेस्ट के तौर पे प्रिंसिपल के तौर पे हो रहा है, बी इनकम मुझे बता रहा है मेरे पास कितना पैसा आ रहा है, सी एक्सपेंसेस मुझे बता रहा है मेरा कितना पैसा बाहर जा रहा है, डी नेट इनकम मुझे बता रहा है कि कितना आया कितना गया, वो मुझे कंप्लीट बता रहा है, और डेप्रिसिएशन टैक्सेस मुझे बता रहा है कि टैक्स के तौर पे व्हाट इज माय बेनिफिट. एंड फाइनली जब मैं इसको समराइज करता हूँ तो इट गिव्स मी क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, कि मेरे पास टोटल पैसा 25 ईयर्स में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 25 ईयर्स में जो टोटल पैसा आ रहा है दैट इज 299. क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो जो आ रहा है दैट इज 299 lakhs. So that is the investment is 20 lakh 40 lakh rupees, and again that we are getting 299 lakhs. So this is the basis of the financial modeling. और अगर मैं इसकी जगह ये इसको पार्ट्स में तोड़ के without breaking, if I show you some sort of, अभी ये this is a small part actually, this is not a major sheet, this is again step 2. The step 3 would be a complex sheet. If I put forward this sheet to you in this format, it would have been very difficult for you to understand this, because this is generally how the financial modeling sheets are presented. But just for the sake of learning, I have divided this sheet into the simple part in a chunk of the digestible size, and then so that you get a clear clarity in the philosophical point of view, what is income, what is expenses, how it is happening, what is incoming, what is outgoing, and then you get a clear understanding that how this financial model is getting built up. So tomorrow we will clear all this sheet in detail, and then we will gradually go to the next segment and the third, which is ultimate segment. So this would be tomorrow's proceedings. So we are closing this session here. So we will be getting into it tomorrow. So any questions or any doubts or anything which you wish to ask from the NPV point of view, IRR point of view, PR, CUF, specific yield point of view, or any other which things we have shared, I would welcome your question if there is any questions. So Amit Chopra ji is mentioning tariff is the amount we are selling power at, right? Yes, Chopra ji, absolutely right. Tariff is what you are selling. Could you please share that? Yes, I will share this Excel sheet with you tomorrow. PPT and Excel sheet will come to you along with the 2 bonus resources. So can't a loan at lesser interest rate also improve IRR? Yes, absolutely. If your loan is at lesser interest rate, let us say the bank SBI is offering you at 10% and ICI is offering you at 9%. So अगर आप 9% पे लेते हैं तो आपका expenses कम हो जाएगा. Expenses is your outflow. अगर आपका expenses कम हो जाएगा तो now the benefit of the financial modeling is कि you can tweak the things anytime. यहीं पे करके देख लेते हैं जो आपका क्वेश्चन है. आपका लोन रेट यहाँ पे 7% है और अभी आपका IRR कितना है 18% है, तो मैं इस लोन रेट को 7% की जगह 6.5% कर देता हूँ. तो यहाँ पे आप अपना IRR देखिए 18.11 की जगह 19.09 हो गया है. डज दैट आंसर योर क्वेश्चन विजू कृष्णन जी? Wonderful, sir. Chopra sir, will be recording of this presentation be made available to us? This recording is there definitely, and for that you would have to request to CBIP. So is there anyone from the CBIP side right now there to answer this query? Anyone there from the CBIP side to answer this query? So I guess there is some. It might be there is no one from CBIP right now, or is it like
they are not on the seat for some minutes. So what I will do, Amit ji, I will put forward your point to them, and I'm sure that they are recording this only for the purpose of sharing with the participants. I will put forward your message to them. You're welcome, sir. Any other question from the participant? We have dealt a lot. How it is going? Are you finding it interesting? Are you finding it enjoying? Are you finding it, learning something, which was out of, out of reach for the engineering students or engineering background people? How is your experience? What is something new you are finding out? कैसा लग रहा है? Would someone like to share on the mic? So Muhammad Nazir ji is writing interesting learning, fine sir. Dushan ji is writing, Junaid ji is writing very nice and interesting value addition. Anyone would like to share? जैसे I shared it within the beginning that कि जो engineering students होते हैं, जो engineering people होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा financial and legal का जो होता है वो slightly behind the curtain रहता है. So what is their finding? Is it so difficult? क्या इतना मुश्किल है कि that the engineering student can't do it or engineering people can't do it? Is it so tough? Did you find it so tough? इतना मुश्किल तो नहीं है. Hello. Yeah. May I know your good name, sir? I'm Sachdeva, retired chief engineer from CEA. I Wonderful. retired in '96. Wonderful. When I was doing my job, I was dealing with the World Bank documents or even tender analysis and all this thing. Wonderful. In one of the tender, Yes, sir. financial particularly, I got 100 clauses. 100 clauses. And each clause was contradicting to the other one. Okay. So I had to go through all the 100 clauses to find out which is good and which is bad. While BHEL only gave some few clauses which could be linked with that one. But Calcutta people gave so much big, it was difficult for me. But then finally I rejected the Calcutta people. I went into BHEL only. So this is my personal experience. We did do every class. It is not that engineers do not do, but it depends upon the time and your interest. Yes. Interest is the key actually. Interest is the key. And thank you so much for sharing it, Sachdeva. It is such a pleasure and honor to have you here. So you got retired in 1996. So you are, I guess you are more than 85 right now. So it is now wonderful. in 84. So my guess is very. But still I am participating. Though my pickup has gone small, less now. But I still try to understand. That speaks about your interest. You mentioned that depending upon the interest. So that speaks about your interest that you are on the 85 and still you are participating, sitting there for the 2 hours. And this is something commendable, sir. Something really appreciable. And true, Another suggestion, this statement which you are showing the breakup of all this, can you send it before time the people come for the meeting? Suppose you send it today and they study and then they come tomorrow when they have some information or something to be sought or something to be equipped with. Sachdeva sir, I have mixed understanding on this front. Actually, when there are two levels on this, the level one is that when someone gets this sheet beforehand, I mean, there is nothing like good or bad into this, but sometimes, either they get confused or they get overconfidence, and both are not required. Both the states, overconfidence and the confusion, both are not good for us. So once my intention is that once the understanding is built up for these sheets, this sheet will be transferred to them, and then they would be tweaking it, they would be working on it. So otherwise, what happens that if we share it beforehand, some of the participants do miss the class. समझ आ गया है हमें. But there is so much other things also which is not पेपर के ऊपर शीट तो दिख जाता है बट उस शीट के साथ जो काफ़ी बातचीत जो होता है वो सब रह जाता है एंड जो पार्टिसिपेशन भी थोड़ा कम हो जाता है. सो दिस इज कमिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस कि
every resource should be shared after the presentation. The main intention is, and I'm very frank and honest with all the participants, the main intention is that let's let's make sure that participants receive all this what is intended to deliver to them. जो कुछ भी उनको देना है वो पहले ले लें from the understanding point of view, and resources are there meant for the purpose of practice to strengthen those points as revision. तो इसलिए सचदेवा साहब, with due respect to you, I feel like that resources should come later on. First तो ये है कि क्लास में मतलब क्लास में जो शेयरिंग होना है, जो आदान प्रदान होना है नॉलेज का, और जो क्वेश्चंस होने हैं उन सबको हैंडल होने दिया जाए, उसके बाद ही वो सब चीज़ों रिसोर्सेज को उनको शेयर किया जाए, ताकि वो रिसोर्सेज को क्यूरोसिटी के साथ उसको वर्कआउट करें. आप इमेजिन कीजिए ना, अगर आपके पास एक रिसोर्स पहले ही आया हुआ है और जब वो रिसोर्स बाद में जब आपके पास आता है तो शायद आपको उसको देखने की उतनी इच्छा नहीं रहेगी ढंग से करने की. बट अभी जब ये रिसोर्स बाद में जाएगा तो उनको उसको खुद करने की एक इच्छा रहेगी, और उनका उस टाइम पे लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होएगा, जबकि पहले वाले केस में उस रिसोर्स को खोलते वक्त लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उतना अच्छा नहीं होगा. तो ये थोड़ा सा फिलॉसफी है इसके पीछे. आई फाइंड इट मोर वर्केबल. दैट इज व्हाई आई डू फॉलो इट लाइक दिस. I agree with you, but my experience in the technical aspect is that the first I read the paper, then going to the meeting, and I could raise many issues which may not be at that time come to your mind when you are just attending the meeting. So as far as technically there, that's my approach. You are right. As per your financial approach is there, again the question of technical financial comes. Yes, yes, yes. That your approach is absolutely fine when we are going for any meeting or any project. But for the learning purpose, or for the sharing purpose, I take it as more as dialogue. I requested all the participants that please be attentive. My intention here is to make sure that all participants are receiving what is intended to be delivered. And that is why I encourage them to participate more. And unfortunately or fortunately, we are into this virtual era right now. And in this virtual era, it is very difficult to maintain the energy levels. And But I am happy in the virtual level because I am sitting in USA. I can't come to India. Yeah. So it is good that you are enjoying your stay there. I am now fully taking rest and reading only, nothing else, only reading. You can utilize your time in guiding a lot of new income. Writing and reading. Yes. Definitely two things. These both are the wonderful things, writing and reading. God bless Pleasure. you. I Thank you. was very much interested to understand the things. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thanks. So one Any- request, kindly reshare yesterday's recorded link, please, again. It was so- not open yesterday for me. What is your good name, sir? Himanshu. Yeah, Himanshu, what I will do, I will put forward your request and I will ask them to share the recordings of both the days, for yesterday and today also. And since I can That will see be great, sir. yeah, I can see that recording is happening, so definitely they would be sharing it with you. I would carry forward your request to them. Thanks a lot. Welcome, sir. Any other questions from the participants? We are now quite in a good shape to understand the financial modeling. We have just begun the Excel sheet. Tomorrow we will be completing it, and gradually we will go to the next level. So anything which is not clear to you or any feedback which you wish to share, kindly do share it with me so that I can improve upon it. My whole intention is that I am also learning in the process of sharing the knowledge with you. And if any feedback comes from your heart, from your side, I will take it. I will embrace that feedback and kindly share your feedback. So the intention is that we can improve upon. So if there is any feedback, then please let me know. Or if there is any question, then please let me know. And then we can, after that, we can wind up this session. So Will this sheet be shared with us today, sir? By any this chance, sheet or will you come do to it you tomorrow? tomorrow, sir. Tomorrow.
Let me Okay. explain to you this sheet, and then you can get it tomorrow, and then you can go through it. Okay, so Sir, one question, please. yes, sir, yes, sir. Sir, can this sheet be used for the wind power plant as well? Yes, yes, you can use this sheet for the wind power plant as well, because the financial modeling rules are same for everything, and only you would have to tweak on the basis of उसका जो भी parameters wind के perspective से आएंगे. It could be possible you would have to add one or two parameters into it, but otherwise actually I have tried to teach you financial modeling. मैंने आपके साथ जो share किया है knowledge, वो मैंने financial modeling का क्या essence है, फाइनेंशियल मॉडलिंग क्यों होती है, कैसे होती है, वो सब शेयर किया है. यू कैन अप्लाई दिस स्किल इनटू एनी ऑफ योर एरिया. कुछ भी आप प्रोजेक्ट करते हैं उसमें आप इस फाइनेंशियल मॉडलिंग को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं. I have tried to start right from the basics, NPV or IRR. I have attended some financial modeling sessions also quite a long time ago. बहुत टाइम पहले की बात है. They never taught about NPV, IRR, क्या significance है इन सब चीज़ों की. So when our basics are not in place, it is very difficult. So what my point here is that you can apply it to anyone, चाहे वो wind हो या कोई और प्रोजेक्ट हो, किसी भी में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. Yeah, I think one or two factor, irradiance and all these things will not Yes. be relevant for you. Yeah. So if we request if you can throw some light tomorrow on those factors which could be modified during the wind analysis. To be honest with you, sir, I deal only in the solar part, so I would not be Okay. able to do the justice to the wind part. But I would try to arrange some resources for you. I would request you to kindly drop an email to me, and I can work out on some resources and I will share it with you. Oh, absolutely fine, sir. No issues. So, any other questions or any other feedback? Anyone wishes to share how they are finding out? Anyone wishes to share anything, and then we can wind up this session. Okay, so should we wind up this session? Okay, so thank you so much all the participants for showing up enthusiasm, courage, and sincerity for today's session. I can see that all the participants have been remained present for the session. Thank you so much to all the participants. And tomorrow we shall be covering this financial modeling in the Excel sheets. So make sure the crux is coming tomorrow, and make sure that you attend the session, and make sure that not only you attend the session, you remain present there without any restrictions, so that whatever important part is getting conveyed to you tomorrow is delivered with you. With these words, thank you so much for your participation. I'm really happy with your interactions, with your responses, with your answers, with your queries. It makes a lot of sense to when we receive a lot of queries and answers in the response. It builds up the environment. And I hope together we all will be able to sharpen our skills for the financial modeling. I also do learn a lot when I interact, because a lot of things comes clear to my mind also. And thank you so much. And I wish you all the best. See you tomorrow. Thank you so much. Thanks. Thanks, sir. Thanks a lot. Thank you. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Mr. JP Singh, Yes, sir. see, they was again speaking. Yes, sir. Yes, sir. Can you, sorry, I am talking to you my personal thing now. No issue, Can sir. you give me something which is in the soft copy to read for the financial part of it? Sure, sir. I have the documents. I kindly give me your email ID. I will send it to you, sir. ML Sachdeva, Just one sec, sir. MLSACH, na? SACH Deva. at Yes. the rate of hotmail.com. Yes, sir. Right, sir. Right. I will mail I'm it. very fond of reading technical. I'm reading here, no problem. Financial, I'm totally out. But just for information, not for any commercial or any other thing. No, no, sir. I have some material. I will share it with you, sir. Thank you. God bless you. Thank you, sir. Welcome. All right, participants. Thank you. Bye. Bye.
in the coming meeting on 25th, 26th of CBIP, I am putting my paper on hydrogen and fuel cells. It will Wonderful. be made, will be presented at Baroda. Wonderful, sir. When it is, sir? Sorry? It is virtual or physical, sir? No, it's physical. I am not coming. My colleague will present it. Okay, sir. But I Okay. have written that paper. Wonderful. PP is too big. PPT is too big, but I don't know how much is going to speak. There are 50, 100. You see, US is so much full of knowledge on Hmm. the internet that Hmm. you can go on reading. And updation is also there. From Yes. 2011, 2012, updation what has been done from the solar till today, they are still doing on the cells and other thing, fuel cells, hydrogen. Yes, sir. So it takes a lot of time in reading and understanding this. Yes, sir. Reading is the most blessed habit, I must say. Reading is the most highest blessing, actually. You know how many time I read in a day? I can see out from your voice that you are fond of reading. 11 to 12 hours in Uh, day. yes, sir. I- Yes. Reading is a true blessing, actually. And I go on listening to webinars. Every day there are 2 or 3 webinars, 1 Hmm. hour each. So I participate that one. And sometimes the reply comes, sometimes the reply do not come. Yes, sir. They also hesitate to commit what applies to you. I That's. asked a very simple question. Hmm. You are giving me Hmm. the conductivity of aluminium. Hmm. You are giving me the conductivity of steel. It was not conductor, ACSR conductor, improvement in the resistance. Okay, sir. Okay. Then if you go into standards, the value is only of the steel, aluminium, not of the steel. Yes. What is the right thing? You see, you are telling me steel conductivity is 10%. You want Okay. to make it to 18%. Okay. Aluminium conductivity is 58%, 59%. You want to go to 65%. Aluminum, I can agree. I can do it also. Uh-huh. But steel, nobody has used it, this conductivity in the resistance. Uh-huh. So steel is always neglected. Uh-huh. Similarly, in Castrella steel core, now you are getting carbon flex, uh, uh, carbon core with the fibers. The weight is reduced, strength Mm-hmm. is increased. So you are getting the benefit. Steel is now not, but it is costly for the time being. High Mm-hmm. temperature, you can go with the carbon core, while steel and aluminum start annealing. This reply they did not give me whether resistance will get affected or not. If I try to improve on this steel, what is Mm-hmm. going to happen? And Yes. it is not being considered. So they did not reply. This was the DOE, Department of Energy, US. Mm-hmm. So sometimes I get the reply, sometimes I don't get the reply. But Mm-hmm. I keep on asking them that India is not behind. Mm. India is also leading. Yes, yes, sir, Deva sir, yes. Sorry, I am taking your lot of time. No, 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 sir. Fine, sir. Fine, fine. Thanks. I'm But just understanding that you are applying yourself. So during this time, generally, if people. you have heard, if you have heard about the solar, Yes, did you find any vertical panels? yes. The vertical panels are there from the BIPV perspective, building integrated photovoltaic. No, So I am asking different. okay. The solar panel which you have put on the roof or in the major projects, Mm-hmm. those are either inclined or horizontal, depending upon what is the rotation and other thing. Yes, yes. But in Germany, they are investing, they are finding that instead of to reduce the space, they are putting the panel vertical. Mm-hmm. I have asked them the question how they are going to get the radiation. There is Mm-hmm. no response coming. Mm-hmm. Instead of 45 degree or 30 degree or 60 degree, depending on the
solar sun root. Mm-hmm. If I make the vertical, there will be either no irradiation or there will be something else. But I'm not getting any reply from them. If you can get something, check with somebody, what is the situation of the R&D on that one? They gave one photograph where it was shown as vertical standing, but further no information. It could be possible that they are into the stage of development. And no, the only point is there's no rotation. If you tell me a rotation is not there. These are fixed one. Either some reflector is there, like your thermal solar. What is happening in the thermal solar? You have reflector all around the periphery, and all the light is reflected into a focal point, where you get a big lens in such a way, concentration too much and used for heating the boiler water, and then boiler become like thermostation. That is there in 3 or 4 countries, but it takes a lot of volume is high, but it takes a lot of space. The whole system depends upon the how the reflectors are put on these stands and how the angle is circulated. Yes, I can understand there is a lot of to be worked upon in terms of placement of the panels, in terms of mounting of the panels, in terms of ensuring that the irradiation is not falling into the space of inter-row spacing. All those things need to be. So Germans are Germans. They used to develop the things in a slow and steady manner, or it could be possible that they might be seeking some patent for it, and they might choose to keep the things hidden till the time patent things are not applied. So all those things might be possible, Satyaji. But the panel which has been purchased in 2016, 17, 18, 19, they are becoming obsolete in USA. They are becoming, sorry? Obsolete. Okay. Now, what we are purchasing in so much megawatts, if we are purchased in 1920, efficiency is reduced as compared to present efficiency, and it is to go for 25 years, 30 years. What is the loss going to be there? Secondly, USA do not go in such a speed to install the installations, because they wait even 0.5% frequency efficiency increase will give them a more beneficial for 25 years or 30 years as compared to 14% taken panels and goes for 25 years or 30 years. Sachdeva sir, I'm just interrupting you here, but my understanding is that there is a lot of myth about the efficiency. In fact, it is a good thing that you have brought up. I would share it with the participants also tomorrow. What do you understand? Now, this is very interesting, Sachdeva ji. I just wish to humbly ask you one thing, and you would find that there is a lot of, new insights. Let us say if there is a plant which is having panels of 20% efficiency, and there is a plant which is having 15% efficiency panel. Okay. Now plant A is 100 kilowatt, plant B is also 100 kilowatt. The panel efficiency in plant A is 20% and the panel efficiency in the plant B is 15%. Right. Which according to you, let us say if plant A is plant B, which is 15% efficiency, is giving you 1,50,000 units in a year. 1,50,000. So what according to you would be the generation of plant B? Plant A, there which is is not only one factor, there are so many factors involved. Let us say how much O&M charges are coming. No, I'm just saying that both the plants are identical, just like Ram and Sham. I mean to say they're exact identical. एक ही जगह पे लगे हुए हैं. Life is same. The plant is absolutely same. I mean to say
Only difference is that plant A has 20% efficient panels and plant B has 15% efficient panels. Rest Cost is same, cost might be cannot be, cannot be. cost cannot be same because of high If efficiency. its cost is not the same, how can be returns and everything be same? No, I'm just asking you that will there be any difference in generation? Let us say, will the generation increase by 5% of plant A because it is 20% against 15%? Not necessarily, not necessarily. But it will be more than, definitely more than the 20%, more than the lower efficiency. Because the price of this thing, Uh-huh. people are getting the market with even 0.1% increase in the efficiency, 0.2% increase the efficiency. The olden time of 3%, 2% efficiency is gone. Now solar panels cannot go more than 1.1%, 0.1.5, 2%. The increase, marginal increase is there. So Deva sir, with very humbled capacity, I just wish to share with you that I have seen this myth of efficiency is prevailing in the industry. If you ask me, 15% and 20%, no difference at all. This efficiency is actually, and ये जो vendors हैं, इन सब लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा रूट कर दिया है. मतलब, let me tell बताइए you, मेरे को जरा. मैं आपको explain करता हूँ. Very interesting, आपको हंसी आ जाएगा मतलब. कि इतना नहीं, इंडियन सिस्टम जो है, हाँ. I have worked on 25, मतलब 50 years now. In India, I was up to 2015. After retirement also, 96, I worked as a consultant at various places. Though I went into foreign countries for consultancy from India side, I did participate in this thing. You see, I make my statement based on my intuitions and how to make this thing. I'm not saying anything to those things, sir. I'm just sharing what I have learned in the. Let me put forward an example, sir. Please see what I'm trying to convey to you. If you have a 300-watt panel, okay. If there are any participants there, I can see that 5 to 6 participants are there. I would also request them, please listen to this. This is very interesting and very eye-opening. If you have 300-watt panel, what would be the efficiency? You need not to refer to the specification sheet of the vendor. Canadian Solar का specification sheet देखने का कोई need नहीं है. The 300-watt peak panel का जो efficiency है, that would be 15%. And how it is 15%? Because 300 watt, let us say we are assuming here कि उसका जो panel का size है वो 2 मीटर by 1 मीटर है जो standard industry में होता है. Right. 2 meter by 1.98 or something. Something like 2 meter and 1 meter. So the area, square area is 2 meter. 2 meter. Right? Yeah, 2 square meter. And if you are giving an irradiance of 1000 watt per square meter, एक square meter में आप 1000 watt, 2000 हो गया आपका. 2000 watt आपने उसको प्रकाश दिया. And what the panel is giving you 300 watt. So Right. you can 300 by 2000 you get 15%. So this panel is giving you 15%. Now you take the second panel which is for 400 watt and the panel size is same. Slightly variation होगा, let us say 2.05 meter, 1.05 meter, but उसको 2 मीटर ही मान लेते हैं 1 मिनट के लिए. ठीक है, 2 स्क्वायर मीटर. तो अब 2 स्क्वायर मीटर के ऊपर आपने 2000 वाट का प्रकाश डाला and it is giving you 400 watt. It means it is 20% efficient. Now comes the next question. अब आपको 100 किलोवाट का प्लांट डिजाइन करना है, प्लांट ए, 100 किलोवाट का प्लांट डिजाइन करना है प्लांट बी. प्लांट ए जो आप डिजाइन करेंगे उसमें आप 300 वाट का पैनल लगा रहे हैं. तो हाउ मेनी पैनल्स यू विल पुट अप? You will put up approximately 330 panels because one panel is 300 watt. So you will put up 333 panels so that you make up 100 kilowatt. Now in the plant B, you would be putting up 250 panels because 400 panels का आप लगाएंगे और 250 panels लगाएंगे तो आपका 100 एरिया इंक्रीज हो गया. हाँ. Now अब 100 किलोवाट का पैनल है, उतना ही प्रकाश ले रहा है वो, उतना ही प्रकाश उधर जा रहा है. उसकी एफिशिएंसी इज द एफिशिएंसी ऑफ द स्पेस एक्चुअली, क्योंकि वो कम जगह में आपको 100 किलोवाट दे रहा है. दैट इज द स्पेस एफिशिएंसी, नॉट द प्रोडक्ट एफिशिएंसी. इसका मतलब ये नहीं है कि वो 15% है तो वो अगर 1000 इनपुट देता है तो 20% वाला 5% ज्यादा देगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. सिर्फ एक चीज बताइए. इफ आई एम गोइंग टू पुट
more number of panels in the same area, right? My cost will not increase. But no sir, my point here is कि जो efficiency के account पे आपकी कोई generation नहीं बढ़ेगी. Let us say if I am saying कि मेरी 15% efficiency है, अगर मैं एक vendor मेरे पास आता है, I'm just putting up the another perspective. एक vendor मेरे पास आता है कि साहब this is my panel which is 15% efficient, this is my panel which is 20% efficient. तो आप ये लगाएंगे तो आपको जनरेशन ज़्यादा मिलेगा. ओके बट अगर मैं प्लांट ही 100 किलोवाट का लगा रहा हूँ तो मुझे कोई जनरेशन ज़्यादा मिलेगा ही नहीं. मुझे तो 100 किलोवाट से उतना ही मिलेगा जितना ए से मिलेगा उतना बी से मिलेगा. ओनली द थिंग इज कि वहाँ पे मेरे 333 पैनल्स लगने थे, यहाँ पे मेरे 250 पैनल्स लगेंगे. तो एफिशिएंसीज इन टर्म्स ऑफ स्पेस, एफिशिएंसीज इन टर्म्स ऑफ जो उसका स्ट्रक्चर लगना है, वहाँ पे उसको स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा 333 पैनल्स के लिए. हियर ही विल हैव टू पुट द स्ट्रक्चर फॉर 250 पैनल्स ओनली. सो बट जनरेशन वहाँ पे भी लेट अस से 1500 यूनिट आएगा पर किलोवाट, वहाँ पे भी 1500 आएगा. वहाँ पे सिर्फ ये हो सकता है 1500 की जगह 1510 आ जाए, क्योंकि जो केबल के लॉसेस वगैरह हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे. बिकॉज 330 पैनल्स में आपका केबल लेट अस से 330 मीटर्स लग रहा था और 250 इन्वर्टर में भी कम हो गए, केबल में भी कम हो गए, ट्रांसफार्मर में भी कम हो गए. इफ यू लुक एट द एसी आउटपुट एट द एसी और डीसी, बट वो सर बड़ा माइनर होगा. इट इज नॉट, वो 5% के ट्यून में नहीं होगा. ऐसा नहीं होगा कि अगर मेरा 1500 है तो वो 5% बढ़ जाए, वैसा नहीं होगा. अब तो नाउ द पैनल्स आर कमिंग विद 23% एफिशिएंसी, तो इस केस में तो वो 8% एफिशिएंसी ज़्यादा देनी चाहिए. बट दिस विल नॉट हैपन. वट आई हैव अंडरस्टूड दैट कि जो वेंडर्स होते थे मार्केट के अंदर, वेन एवर द कस्टमर आज की कोई बढ़िया दिखाओ and they said ki sir go for this is highly efficient, and the customer believes that efficiency is directly related to generation, but efficiency is not related to generation here. Efficiency is only कि वो सूरज से कितना ले रहा है और आपको उसको कितना दे रहा है. तो अगर आप किलोवाट कैपेसिटी में ही सेम लगाते हैं, 100 ही यहाँ लगाते हैं, 100 ही वहाँ लगाते हैं, then there is no benefit of going with the highly efficient panels. This is actually a myth in the industry. एंड वेंडर्स ने इसको बहुत ज्यादा कैपिटलाइज कर लिया है इस मिथ को. देखिए जो इंटेलिजेंट परचेजर है, कंज्यूमर है, he will definitely think into the other linked issues, not only efficiency. Right? Because as you say base, sometimes base is better than the higher efficient, the updated version of it. Right? Because its durability is more, its expenditure is less, it's meant, because as you go on refining, you find there will be so many variation will come, variable will enter into that it will at the certain after some time its efficiency will come down and decrease, while in the base metal there will be no decrease. It will mostly remain same, because there is no variable which are going to come in the or improvement which has been done which can return back to the base. Base is a fixed material. So you are right that it is not, but it has to be taken with a pinch of salt. You cannot simply say no, this is the only thing. Yeah, that is what I am saying, Mr. Deva Sahab. I will also try. I'll try to this. But now you have given me this issue. Yeah. I'll look into that. That is why I have shared with you, because if you will go through it, definitely it is going to come back to me. And now you have raised the issue. I'm not going to leave it. So that is something wonderful to see when people interact. These interactions open up new things, and ultimately together we learn all, and that's the whole purpose. Because efficiency increase is taking a lot of cost. In USA, government, federal government gives billions of dollars and millions of dollars to individual to create better efficiency and other things. So that all has actually the commercial benefits. Now everyone is wishing to, go for the higher